Guys, let me know if you guys can hear me. Yes. Great. Yeah, we can. Yes, I can. Yes, we can. Yes, Yes, I sir. can. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. एक बार अपडेट कर देता हूँ. चलो guys, so let me share my screen. Okay, let me know when you guys can see it. Okay. So guys, can you share my see my screen? Yes, sir. Yes, bhai. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, we'll start then. Okay, let me start from the beginning. Bro, like, can you mute everyone's audio and video? What happened? Can you mute audio and video both for everyone? So, like, You guys can hear me, right? yes. For other people's audio and video. Yeah, I'm muting, but people are unmuting now. What I'll have to do is stop people from unmuting themselves. कर ही देते हैं Sir, मतलब. don't mind. Sir, there is an issue. There are like patches that we can that are not allowing us to see your full screen. Yeah. You will be able to just hold on a minute. Okay. Okay, sir. Yeah, like, once you start your this people go through the PPT, so you can mute everyone. After that, then when you Done. start. Chalo, I'm now muting everyone here, guys. Okay. So you guys can see my screen. Just message me if you can't. You just guys message me now on what's from the group. Okay, I'll keep a watch at that. So guys, welcome first of all. Okay, this is the beginners course. Okay, and before we start, let me just set the stage, like what should we expect by the end of this course. Okay, so क्या होगा, क्या हम सीखेंगे by the end of this course, ठीक है, क्या agenda रहेगा, how will we proceed. Okay, that I am going to discuss. Okay, so what are the things that will be covering over here. Okay, so I'll have a normal setting the scene, what should be the expectation. I'll also give you guys a brief introduction of myself, which anyway is not needed, but just just keeping it a bit professional. Okay, then what we'll discuss about different asset classes. ठीक है, क्या क्या अलग asset classes होते हैं जहाँ पे आप invest कर सकते हो. ठीक है, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे फिर स्टॉक मार्केट होता क्या है. ठीक है, स्टॉक मार्केट इज ऑल्सो टाइप ऑफ एन एसेट क्लास. ओके, फिर विल डिस्कस स्टॉक मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस क्या होती है, कितने टाइप की होती है. ठीक है, ब्रीफली ये सब अभी बेसिक हम बात करेंगे. ठीक है, इन डेप्थ नहीं जाएंगे. ठीक है, और टेक्निकल एनालिसिस समथिंग जो हम बिगनर में भी कवर करेंगे, इंटरमीडिएट में भी करेंगे, एडवांस में भी करेंगे. तो यहाँ पर हम बेसिक चीज़ें बात करेंगे उसके बारे में. ओके, फिर उसके बाद हम फ्यूचर्स के ऑप्शंस क्या होता है उसके बारे में बेसिक, क्योंकि ये बड़ा बहुत डाउट होता है लोगों का. ठीक है, तो ये हम बात करेंगे. देन विल हैव एट लास्ट Q&A. ठीक है, so any doubts guys, anything that you think is missing over here? If anything is there, just message over the group. Okay, I'll try to cover that, but keep it basic. If anything you are thinking is missing, कुछ भी अगर मिस हो रहा हो इसमें से जो बेसिक में, तो आप बताओ, will include that. Okay, Vijay Sharma is waiting. ठीक है, so एक तो ना मैं these people fucking bother me all the time. Okay guys, so let me go to the next slide. Okay, so just a brief introduction about me. I'm from Delhi. I work in an MNC. I'm from IT Dhanbad.
ठीक है, this is the YouTube channel link, Telegram link, my experience in market around 6+ years, and the basic thing which I am very good at, that's up to me, I consider myself good at, okay, is in price action trading and Elliott wave. So those are the few strengths that I have to understand how the price is unfolding and how to apply Elliott wave. So these are the two major strengths that I have in market, and I like to make you guys also strong in these two at least aspects, if not all. Okay, now moving to the asset classes. Okay, so एसेट क्लास के बारे में यार गाइस किसी को पता है लाइक क्या होता है एसेट क्लास? लेट मी जस्ट अनम्यूट यू गाइस फॉर सम टाइम। ओके, सुनते हैं आप लोगों से। So guys, you can unmute yourself and tell anyone knows what an asset class means and what are different asset class. Any idea? Like commodity, equity, mutual funds, future and options. No, future and option is not an asset class. So I think cash market. Major asset class are the Real estate. Real estate is one asset class. Gold. Gold is yeah, gold is Commodity. commodity है, Metals. but हाँ, गोल्ड देखो कमोडिटी है, लेकिन गोल्ड अपने में एक एसेट क्लास है। Currency. करेंसी, यस। Metal. Equity. हाँ, बट एक और चीज और, करेंसी Bonds. एसेट क्लास नहीं होता है। Bonds Bonds which you can- gets returned to us for the long term is known as asset class. Exactly, means asset class is something which you can actually invest and keep hold. अब करेंसी फॉर एग्जांपल, अब जो करेंसी ट्रेडिंग होती है, ओके, वहाँ पे सिर्फ फ्यूचर्स होते हैं, डेरिवेटिव्स होता है, वैसा तो होता नहीं है। यूएस डॉलर तो कोई बेच नहीं रहा होता है, ओके। इफ यू गो एंड बाय यूएस डॉलर, या दैट्स फाइन, दैट्स एन एसेट क्लास इन इटसेल्फ, वहाँ बोल सकते हो करेंसी है। बट यहाँ लेट्स स्टिक टू ट्रेडिंग पार्ट। सो अगर ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो करेंसी तो यार यू कैन नॉट एक्चुअली डू एनीथिंग अबाउट इट, बिकॉज वो तो फ्यूचर्स एंड डेरिवेटिव्स है, सिर्फ फ्यूचर्स होते हैं उसके, करेंसी की आपको एनीवे एक्सपायरी है, तो दैट इज नॉट एन एसेट क्लास। ओके, ठीक है। सो कीपिंग इन माइंड वही, सो सेम चीज मैंने यहाँ पे डाली हुई है, ठीक है, कि एसेट क्लास वेरियस हमारे पास क्या क्या है। तो अगर आप देखो वेरियस, मेनली जो हमारे पास एसेट क्लास हैं, ये इक्विटी है, गोल्ड है, रियल एस्टेट है, डेट है, जो बॉन्ड्स आप लोग बोल रहे थे, और पर फिक्स्ड एक्चुअली इनकम। प्रॉपर दिख नहीं रहा है। There is one patch over हाँ, पैचेस आ रहे हैं। आप थोड़ा रेजुलेशन भी बढ़ाए, थोड़ा बहुत कम हो। सर फुल स्क्रीन भी कर लो सर, नेक्स्ट स्लाइड भी दिख रही है। ओके ओके, एक्चुअली देखना ये वाला आप F5 मारोगे तो आई थिंक इट वुड नहीं, जस्ट होल्ड ऑन, आई विल डू दैट, बट होल्ड ऑन जस्ट अ मिनट। यस, नाउ यू गाइस कैन यू सी फुल नाउ? या दिस इज Yes sir. ये सही है. Yeah. परफेक्ट सर, परफेक्ट। Yes, sir. Right. वो एक्चुअली फर्स्ट स्क्रीन Also कैप्चर कर mute रहा है। everyone. Vishal, mute. Please, Vishal. म्यूट कर दो सबको। सर ये डेरिवेटिव्स क्या होता है? बताएंगे यार, बस होल्ड योर हॉर्सेस। ठीक है, बताएंगे। ठीक है, सो ये डिफरेंट हमारी एसेट क्लासेस हो गई। ठीक है गाइस, खुद को म्यूट कर लिया। बात ये है ना कि मैं सबको म्यूट कर देता हूँ तो फिर आपसे मैं इंटरेक्टिव नहीं हो पाता हूँ। मैं कुछ बोलता हूँ तो फिर आपको मुझे ही जाके अनम्यूट करना पड़ता है, तो खुद को म्यूट कर दिया करो आंसर देने के बाद। ओके सर, फ्यूचर का जरूरत क्या है? हम कैश में भी तो कर सकते हैं काम। तो वेट वहाँ पे करो भाई, वेट करो, वहाँ वन बाय वन। फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है। हाँ, तो वेट करो, फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है कितना शेयर्स में काम करना। फ्यूचर्स में पूरा लॉट लेना पड़ता है। विल टेल यू व्हाई फ्यूचर्स एन ऑप्शन। ओके, ठीक है, जस्ट वेट करो, यू विल गेट टू नो एवरीथिंग, डोंट वरी। ठीक है, सो अब गाइस देखो, ये डिफरेंट इक्विटी क्लासेस हैं हमारे, एसेट क्लासेस हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हो ये बगल में नंबर्स हैं 13, 7, 4, 6, ये क्या है? एनी आइडिया, एनीवन, क्या ये नंबर्स हैं? These are the returns. These are the percentage which they carry. These are the returns that are Historical expected return. on these asset classes. रिटर्न Historical returns. हिस्टोरिकल रिटर्न। Yeah, so yeah, most of you are right. So these are nothing else but these things are just compounded average return, okay, CAGR है ये, ठीक है, of all these asset classes। तो अब यहाँ से देख के आपको क्या समझ में आ रहा है? इक्विटी में सबसे ज्यादा है। एग्जैक्टली, सबसे ज्यादा, या सबसे ज्यादा आपका जो रिटर्न है इक्विटी। अब इसमें एक चीज नोट करना, जो रियल एस्टेट का मैंने 4% लिखा है ना, ये डेटा नेशनल हाउसिंग का है,
ठीक है, इंडिया का। बट रियल स्टेट का जो 4% लिखा है, एक मैंने एक एवरेज दिया हुआ है। रियल स्टेट एक्चुअली डिपेंड करता है ज्योग्राफी पे, कहाँ पे खरीद रहे हो, किस समय खरीद रहे हो, एंड ऑल दोस थिंग्स। ओके, सो इट डोंट टेक इट एज लाइक अ वेरी करेक्ट नंबर, बट हाँ, यू कैन जस्ट अज्यूम उस नंबर से कि हाँ, रियल स्टेट का भी रिटर्न काफी कम ही रहता है। ओके, अब इट डिपेंड्स, हो सकता है कभी कभी के लोग जस्ट लाइक ट्रेडिंग में क्या होता है, आप कोई स्टॉक खरीदते हो, अब अगर आपने सही टाइम पे एंट्री करी तो हो सकता है आपने एक दिन में 20% बना लिया। ओके, बट एवरेज में यू सी रियल स्टेट का भी रिटर्न कम होता है। तो अब यहाँ पे डिफरेंट जब एसेट क्लासेस हम देख रहे हैं, तो हम क्या देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा रिटर्न इक्विटी में है, राइट। दैट इज द रीजन इट इज ऑलवेज सेड कि अगर कोई भी बंदा है, अगर उसे पैसे लाइक इन्वेस्ट करना है, उसे वेल्थ क्रिएट करना है, ओके, ही शुड इन्वेस्ट इन इक्विटी rather than anything else, because in equities you get the maximum and the best returns. Okay, now in equity you can invest through two ways. Okay, one is mutual fund, one is stocks. These are the only two ways जिसके तरीके से आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए, राइट। बचा आपका अब जैसे बाकी एसेट क्लासेस, उनका यूज क्या है? यूज है बस रिस्क मिनिमाइजेशन के लिए। जब आप कोई एक पोर्टफोलियो बनाते हो, ओके, फॉर एग्जांपल गोल्ड, इफ यू सी, ओके, gold average CAGR is 7%. Okay, on an average gold gives you 7%, 8% per year return, not more than that. Okay, जो कि आपको अगर यस बैंक में आप FD खोल लो तो यस बैंक भी 6% 7% दे देती है, ठीक है। सो इट्स ऑलमोस्ट कंपेरेबल। फायदा क्या होता है गोल्ड का? अब जैसे देखो अभी इक्विटी गिरी, ठीक है, मार्च में when equity fell down, all the equity market crashed. That time gold acted as a safe haven for people, okay, who had some money invested there. So एसेट क्लासेस का यूज होता है, आप जस्ट लाइक रिस्क, आप कभी भी रिस्क हमेशा डिवाइड करोगे ना, तो दैट विल बी बेटर फॉर यू। जैसे आप अपना इन्वेस्टिंग भी कर रहे हो तो एक ही जगह पैसे डाल दो। जैसे हम लोग दिन में ही ट्रेडिंग करते हैं, ओके, सो हम क्या करते हैं, 2-3 स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं, ठीक है, उसमें से अगर चलो एक गलत भी हुआ, दो में सही हुआ, देन यू मेक मनी। ओके, बट इफ यू पुट ऑल योर मनी इन वन सिंगल ट्रेड, you will lose. The same concept is here. Asset class, when you build a portfolio, you see कि हाँ इक्विटी में रिटर्न सबसे ज्यादा है, so you put maximum money in equity. ठीक है, इक्विटी में सबसे ज्यादा आप इन्वेस्ट करो, बट यू ऑल्सो शुड कीप सम पार्ट इन गोल्ड, सम पार्ट इन रियल एस्टेट, सम पार्ट इन डेट। डेट क्या होता है? गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं। एनी आइडिया गाइस, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स क्या होते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं? एनी आइडिया किसी को? क्यों इसे डेट इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, किसी को पता है? बॉन्ड्स Because the नॉर्मली government. आरबीआई देता है, वन बाय आरबीआई। वन, वन बाय वन, या टेल मी। बॉन्ड्स नॉर्मली क्या होता है कि जैसे आरबीआई से या फिर कोई बैंक, सो इफ दे वांट मनी, इफ बैंक वांट मनी एंड दे वांट टू रेज द कैपिटल, तो वो क्या करते हैं, बॉन्ड के थ्रू दे आस्क और दे पुट गिव बॉन्ड्स टू द पब्लिक टू रेज द शेयर। Anyone else? There is a fixed return on these government bonds and all. Bonds mean taking a loan from public, not from a bank. सो देखो सिंपल टर्म में, इफ आई एक्सप्लेन, बॉन्ड्स क्या होते हैं, जैसे आप लोन लेते हो, राइट, घर बनाने के लिए, कार खरीदने के लिए बैंक से, राइट। तो आप बैंक के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करते हो, आप बोलते हो कि हाँ भाई तुम मुझे 10 लाख रुपए दो एंड आई विल पे यू फिक्स्ड इंटरेस्ट पर मंथ, या दैट्स व्हाट यू डू, ओके, व्हेन यू टेक अ लोन, राइट। Bonds is similar thing from the other side. So for example, say HDFC Bank tomorrow, wants to raise a capital of 100 crore. So it will issue a bond of 100 crore. Okay. Bond मतलब क्या होता है? बंधा हुआ, ठीक है, just give he is liable, that company, that individual is liable to something. Liable to what? A rate of return. Now that rate of return might be fixed, might not be fixed. Like some people you said ना, वो fixed होता है, जरूरी नहीं है, okay, वो फिक्स्ड भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है, बट you define. So there are different types of bonds, okay, and bonds are structured in different way depending on किस लिए वो उसका यूज किया जा रहा है, okay. So but overall क्या होता है कि अब जैसे देखो ये अभी DHFL वाला केस हुआ था, okay, DHFL फेल, उसमें हुआ क्या था? यही तो हुआ था कि DHFL ने काफी सारे बॉन्ड्स इशू किए थे, कैपिटल अपना बनाया था, और सारा कैपिटल उन्होंने इधर उधर यूज कर लिया फालतू के कामों में, ठीक है, और वो उन बॉन्ड्स को सर्विस नहीं कर पाया, मतलब उस बॉन्ड्स पे जितना उन्हें इंटरेस्ट देना था वो दे ही नहीं पाया। तो कहने का मतलब DHFL ने क्या किया, 5,000 10,000 करोड़ रुपए मार्केट से उठा लिए कि हाँ मैं तुम्हें इतना इंटरेस्ट दूंगा, एंड सिंस दे यूज द मनी इन अ बैड वे, दे डिड नॉट यूज इट प्रॉपर्ली, व्हाट हैपेंड एट द एंड ऑफ द डे? अरे यार एक तो लोग कॉल ही करते हैं, या ब्रो, हेलो, हाँ हाँ,
हेलो नेटवर्क भी नहीं होता है कॉल करते रहते हैं। हाँ, एनीवे, so bonds may exactly is just like loan from the corporate side, okay, and for that they will pay you such. Similarly government bonds होते हैं, जैसे आप यूएस का आप देखते हो ना बॉन्ड रेट, अभी काफी बीच में हल्ला मचा था यार, यूएस का बॉन्ड रेट गिर रहा है, 10 ईयर 5 ईयर यील्ड गिर रहा है, ओके। सो 10 ईयर 5 ईयर क्या है? 10 ईयर 5 ईयर सिंपल ये है कि यूएस की इकोनॉमी नेक्स्ट 10 साल में कैसा परफॉर्म करेगी, उस बेसिस पे यूएस गवर्नमेंट आपको एक फिक्स्ड रिटर्न देती है, ठीक है। Now bonds are more safer. Why? Because they are backed. अरे henchod. Yeah, bro. What happened? Yeah, this is one guy who is calling me from our group only. I think he is not able to connect. Okay, yeah, so anyway guys, sorry, really sorry, अब कुछ लोग कॉल करते रहते हैं, ठीक है। Anyway, yeah, going ahead. So ये डिफरेंट एसेट क्लासेस हो गए। मेनली हमने इस स्लाइड में क्या सीखा कि ये अलग अलग तरीके से हम अपना पैसा सेव कर सकते हैं, ओके। नाउ इन्फ्लेशन आपको पता है क्या होता है गाइस? एनीवन लाइक एनी आइडिया व्हाट इज इन्फ्लेशन? The price of appreciating of price of the currency basically going up or down basically. So basically अगर महंगाई लेमन आती है टर्म वो में कुछ समझाना हो तो क्या समझाओगे? महंगाई। Sir, money महंगाई क्या है? दर। महंगाई दर एग्जैक्टली महंगाई बढ़ती जा रही है। अब सबको निकालना ही पड़ेगा, ऐसे ही चलेगा। तुम्हारी गाड़ी तो प्राइवेट नंबर है। सो अब देखो यहाँ पे इन्फ्लेशन इंडिया का पता है कितना है अभी ऑन एन एवरेज? किसी को Sir, I have आइडिया? a doubt. What is 7%. the Around stated 6 to corporate bond? 7%. एवरेज 6%. हाँ, 4% 5 to 6% वो डिफर करता है, बट हाँ ऑन एन एवरेज 4 to 6% के बीच में रहता है, राइट? तो या सर कुछ एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि एक्चुअल इन्फ्लेशन 15% है, तो वो 15% नहीं बोल नहीं रहे हैं, है, गवर्नमेंट वो बोलती है ऐसा नहीं होता, 6%। ऐसा नहीं होता वो जो कुछ एक्सपर्ट्स बोलते हैं वो सब छोड़ो। देखो अब वो अलग तरीके की बातें हो जाएंगी। नहीं होता है कि कभी यूएस कभी गया ही नहीं था मून पे, अब कुछ एक्सपर्ट्स वो भी बोलते थे, वो फालतू बातें हैं, उस पर नहीं दिमाग Conspiracy डालना theory. है। ठीक है, हाँ एग्जैक्टली। सो दोज आर कॉल्ड कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, फकिंग लीव दैट, ओके। कुछ एक्सपर्ट्स के दुनिया में So कुछ I have लोगों को फालतू बात करनी ही होती है। हाँ, टेल मी। हाँ bro, so as you said like that जो होते हैं वो like money raise करने के लिए, as you give example for this HDFC Bank, right? तो IPOs भी तो same होते हैं, like they raise money, so like या सो आईपीओ, लेकिन और बॉन्ड्स में फर्क हुआ ना यार। देखो आईपीओ कब होता है? जब तुम्हारी कंपनी लिस्ट होने जा रही होती है, जबकि बॉन्ड इश्यूएंस तो यार पूरे टाइम चलता रहता है लिस्टेड कंपनीज के बाद में भी। अब ऐसा नहीं हो सकता एचडीएफसी बैंक कल फिर से आईपीओ थोड़ी ना करेगी, okay, राइट? yeah, So that's the difference, you know. Raising capital is obviously now there are different ways of raising capital. Bonds होते हैं, आपका आईपीओ बिगनिंग में होता है, ओपन ऑफर्स होते हैं, ठीक है। देयर आर डिफरेंट मेथड्स टू यू नो रेज कैपिटल। देखो यस बैंक को कैपिटल ही नहीं रेज कर पा रहा है, फुद्दू बैंक है। एनीवे ठीक है। सो हम बात कर रहे थे अभी इन्फ्लेशन की। अब इन्फ्लेशन देखो क्या है आपका, 4 to 5%, मान लो 4% ही है ऑन एन एवरेज। सो 4% है, इसका मतलब कि आपने अब जैसे अभी एसबीआई में क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है एफडी में? अराउंड 4% ही चल रहा है, 4-5%, राइट? 5.5. हाँ, नहीं 5.5 6.5 चल रहा है, 6.5 मतलब डिफर करता है यार। तुम्हारा आरएम अच्छा 6% दिला दिया, मतलब वही कुल मिला के 5-6% के आसपास चल रहा है, राइट? अब अगर तुम्हारा 4% 5% इन्फ्लेशन है, ठीक है, और तुम्हारा जो बैंक है वो तुम्हें 5% दे रहा है रिटर्न एनुअल, सो एट द एंड ऑफ द डे तो तुम्हें एक्चुअली कुछ नहीं मिल रहा है, राइट? और जो लोग एक्चुअली 4% पे बैठे हुए हैं, और इस साल देखो इन्फ्लेशन एक्चुअली 6% से ज्यादा है, इस साल तो तुम्हारे बैंक ने एक्चुअली तुम्हें पैसा कम ही दिया है, राइट? लाइक यू आर इन लॉस ऑफ 1%, दो यू डोंट रियलाइज। तुम्हें ऐसे दिखता है कि हाँ 1,000 रुपये अभी 1,005 हो गए हैं, ठीक है, वो 5% रिटर्न के साथ, बट वो 1,005 की वैल्यू if you reduce again 5% because of the inflation, that's actually less. So keeping inflation in mind also, if you see best
place to invest is equities. हमेशा equities में invest करो. Now equities में यार obviously everyone doesn't have so much knowledge about stocks and all. So what you should do, you should use mutual funds. Okay, SIPs करो, ठीक है. इंडेक्स स्टॉक्स ETFs होते हैं, उसका यूज करो एंड इन्वेस्ट लाइक दैट. ETFs क्या होते हैं? इंडेक्स को रेप्लिकेट करते हैं, ठीक है. एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो होते हैं इंडेक्स वाले, इंडेक्स ETFs में इन्वेस्ट करो एंड ऑल, बिकॉज यू विल ऑलवेज गेट बेटर. बिकॉज अब इनमें देखो 13, 7, 4, 6 जो ये दिया हुआ है, इसमें सब में से माइनस कर दो इन्फ्लेशन, दैट इज योर एक्चुअल रिटर्न. Okay, this is the return that you are actually, so for equity you are actually getting in real terms what you are getting is 13 minus 5. 8% रिटर्न से ज्यादा आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इक्विटी में रियल टर्म्स में, ठीक है. गोल्ड में आप देखोगे तो अराउंड 2% हो गया. सिमिलरली फॉर रेस्ट ऑफ द थिंग्स. ओके, सो दिस इज अबाउट एसेट क्लास गाइस. नाउ लेट्स मूव. ओके, एक क्वेश्चन था यहाँ पे, कैन आई आस्क? या गो अहेड. विच इज बेटर ऑप्शन? जैसे बोलते हैं ना, बहुत सारा कॉन्वर्सेशन चलता है कि म्यूचुअल फंड और ETF के बीच में, सो विच इज द बेटर ऑप्शन फॉर यार कुछ Mayank. या हेलो सर गुड इवनिंग. हाँ हाँ टेल मी. सर वो आपने वो 7 बजे की टाइमिंग दी थी ना? हाँ हाँ, तो तुम लेट हो गए यार. अब सॉरी, क्योंकि मैं कब तक एडमिट करता रहूंगा, बाकी लोग वो हो रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं. अच्छा सर, क्लास होने लग गई? नहीं भाई, अब क्लास कल होगी. अब तुम कल उठना, ठीक है, कल होगी. कैसे बात कर रहे हो? अरे सर मैंने तो सब चीज ज्वाइन किया था, आपका वाला बैच भी सर, टेलीग्राम वाला भी. उससे मतलब नहीं है यार. जब तुम क्लास नहीं ज्वाइन करोगे तो बाकी सब ज्वाइन कर ले, क्या फर्क पड़ता है. ठीक है, एनीवे यार, आई एम गेटिंग बॉदर्ड. अभी बाकी लोग भी है ना. लेट्स नॉट बी सेल्फिश. ओके, यू शुड हैव जॉइन्ड ऑन टाइम. ठीक है, बाय बाय. सर तो आज की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी? रिकॉर्डिंग मिलेगी लेकिन 1-2 हफ्ते बाद ही, तुरंत नहीं मिलेगी. ओके अच्छा सर, ये मेरे को जीमेल में आपने कहा था मेल में इनविटेशन आएगा, बाय वैसा यार, तो कुछ आया नहीं. बाय बाय बाय. यू जस्ट यूज द ग्रुप में तुम एडेड हो, वहां से देखो, वहां से ज्वाइन करना है करो अभी. ठीक है, बाकी जो मिस हो गया मिस हो गया. ओके, बाय बाय. अच्छा मैं ज्वाइन कर सकता हूँ सर अभी? हाँ कर लो. ठीक हो जाती है. अब बताओ गाइस, अब मतलब इतना मुश्किल है ना, मतलब हाथ पकड़ के मुंह में गांजा खाना मार भी के खिला सो रहे दो, हैं लोग यहाँ पे. खाना भी खिला दो मुंह में डाल के. Anyway, सर आपकी हाँ, कोई आवाज. क्वेश्चन पूछ रहा था, प्लीज आस्क. सर आवाज क्लियर नहीं आ रही है. अरे मयंक please मयंक mute yourself. Mayank bro, please mute yourself. अभी ठीक है? यस सर, यस Yes, sir. मेरी आवाज नहीं थी, किसी और की हो रही थी. हाँ सर नहीं, अभी भी फिर म्यूट ऑल करना पड़ेगा ना. देखो, म्यूट ऑल कर देते हैं, सब सही हो जाएगा. अभी ठीक आ रही होगी. हाँ, तो कि जिसको क्वेश्चन पूछे यार, फिर सिर्फ वो अनम्यूट करो. एक्चुअली यार बाद में पूछो ना, अब इसी पे कितने क्वेश्चन पूछना है. ठीक है, बाद में पूछो. ठीक है, लेट्स मूव ऑन. ओके, ठीक है, चलो. सो लेट्स मूव ऑन नाउ. चलो स्टॉक मार्केट की बात करते हैं. तो लाइक स्टॉक मार्केट भी लाइक वी डिस्कस वन ऑफ द टाइप ऑफ एसेट क्लास था. ठीक है, अब स्टॉक मार्केट होता क्या है? स्टॉक मार्केट क्या होता है? लिस्टेड कंपनीज होती हैं. ठीक है, लिस्टेड का मतलब क्या हुआ? अब जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारे घर के सामने की किराना वाला है, वो भी उसकी कंपनी है. ठीक है, बट क्या तुम्हें पता है वो कितना प्रॉफिट बनाता है, लॉस बनाता है? या क्या तुम जाके कोर्ट में बोल सकते हो कि मुझे इसका प्रॉफिट लॉस जानना है? इज ही लायबल टू शो यू? नो, ही इज नॉट. लीगली इज नॉट. ओके, because he is unlisted, he is private, that's why they are called private firms. Okay, then there comes listed companies. Okay, listed companies are those companies whose ways of working, operational details, profit loss statement, where they are investing, whatever they are doing, they have to tell it to public. Why they have to tell to public? Because they are getting money from the public. जब आप शेयर खरीदते हो तो आप क्या कर रहे हो? आप एक तरह से ओनर बन रहे हो कंपनी में. Okay, whenever you buy a share of a stock, okay, you are what you are doing, you are becoming the owner of that particular stock, right? And you are investing in the company. So if you are an owner, you are liable that you should know also. Okay, then you can request the management कि हाँ भाई बताओ तुम्हारा क्या प्रॉफिट लॉस है. ठीक है, तुम कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो. Okay, so
वो होती है listed company. These companies are required by law to tell people everything that they are doing, okay, to all their stockholders. And since the stockholders can be anyone public में, so इसलिए वो publicly listed होती हैं, ठीक है. So वो stocks हो गए, ठीक है. फिर आता है आईपीओ. आईपीओ क्या होती है? आईपीओ होता है जैसे फॉर एग्जांपल देखो अभी जोमेटो है, ठीक है. जोमेटो एक प्राइवेट कंपनी है, ठीक है. नन ऑफ यू मी एनीवन नोज एनीथिंग. अभी यार कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं भाई. ठीक है. सो अब आईपीओ में क्या होता है? जैसे जोमेटो है, जोमेटो के बारे में आपको कुछ नहीं पता है कि उसका क्या प्रॉफिटेबिलिटी है, बिजनेस मॉडल ऊपर ऊपर पता है, डिटेल में आपको ये नहीं पता उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्या है, ठीक है, कितने सिटीज में कैसे ऑपरेट कर रही है, ठीक है, कितना उसके जो सीईओ है, उसका एमडी है, वो कितना पैसा बना रहा है, ठीक है. नथिंग यू नो. ओके, so these are the things you guys don't know. Let me delete first the invite link from the group. Okay. People will fucking keep joining. हाँ. सो वो जब कंपनी डिसाइड करती कि नहीं भाई, अब देखो क्या होता है, प्राइवेट फर्म्स में एक प्रॉब्लम होती है. जो भी प्राइवेट कंपनी है जैसे जोमेटो है, अब उसको फंडिंग चाहिए, एक्सपैंड करने के लिए उसे फंडिंग चाहिए होगी, राइट. फॉर एक्सपैंडिंग दे विल नीड मोर एंड मोर मनी, ओके, टू ग्रो देयर बिजनेस. नाउ हाउ कैन ए प्राइवेट कंपनी गेट मनी? There are 2-3 ways to get money. One, they can either approach a bank and say, okay, I want loan, and the bank can give them loan. Okay, that's one way. Second way is the owner's money. Whoever owns that company, he uses his own money, okay, in the company. Third way क्या हो सकता है कि they reach out to a VC venture capitalist. आपको पता है guys? Anyone any idea VCs क्या होते हैं? या जो private फंड करते हैं investors? Yes, they are, who fund they fund in different startups, like SoftBank will invest in Exactly, different exactly. companies. So there are different private companies can be there, or even private people can be there. Either it can be an individual or either it can be a company. Okay. So there are few rich people who can say, okay, I will invest in your company and I'll take this much stake. So these are few ways to invest in a private company. But after that, उसके बाद और कोई तरीका नहीं है. Now ये पैसा एक लिमिट तक ही आ सकता है, राइट. उसके अलावा तो फिर आ नहीं सकता है. Then companies decide कि okay, if I want even more money, what is the best way where to get that stock market? Okay, because वहां पे कोई भी पब्लिक में कोई भी इंसान पूरे दुनिया में अगर जिस स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कर रहा है, वहां पे कोई भी जाके उसमें पैसा डाल सकता है, राइट. सो दैट्स द वे दे कैन गेट मनी फ्रॉम so many people and the resources increase. Yeah guys, I don't know should I pick or not. I really feel bad not picking up these calls because these people have paid, but hello. Yeah, tell me. Yeah, tell me. Yeah, but you should have joined earlier na yaar. Why means this is like more than 7:30. Passcode is there, bro, below. I'll just post the same message on the, and you should read that. Even someone posted the passcode. You guys should learn to read fucking all the messages, okay? ठीक है, I'll post it again. You read it and join, okay? Yeah, thank you. Thanks. Same group, learn to trade. Yeah, not learn to trade. There's a group for this particular class. I don't have that. सब बताओ. तो बाकी दिन से अभी क्या सो रहे थे? Anyway यार, अब फिर कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है? You message me on Telegram. I'll message you individually. Bye. अलग लेवल है. एक हफ्ते से चिल्ला के बोल रहा हूँ ग्रुप ज्वाइन कर लो, ग्रुप ज्वाइन कर लो. अभी बोलने मुझे पता ही नहीं है. ठीक है. सो गाइज, ये आईपीओज हो गए. ओके, सो जब कंपनी को लगता है कि हाँ मुझे और एक्सपैंड करना चाहिए, दे नीड इवन एक्सेस टू मोर फंड्स, देन दे गो टू द स्टॉक एक्सचेंजेस, सेबी के पास जाते हैं. जैसे कि ओके, दीज आर माय प्रॉफिटेबिलिटी. सो देयर आर सर्टेन क्राइटेरिया. नॉट एवरीवन कैन लिस्ट इन स्टॉक मार्केट. ओके, यू नीड टू मीट सर्टेन क्राइटेरिया. ओके, ओनली देन द द एक्सचेंज विल अलाउ यू टू लिस्ट इट. फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे दाऊद इब्राहिम की कंपनी डी कंपनी है, वो थोड़ी ना स्टॉक मार्केट में लिस्ट कर सकती, बिकॉज they don't follow certain rules and regulations, right? In fact, they don't follow anything. So to be able to be listed, there are certain guidelines, rules, regulations. So whoever wants
their business to be listed on exchanges, they go to the these authorities, SEBI जैसे इंडिया में हो गई, उससे बात करते हैं, NSE BSE के पास जहाँ पे भी लिस्ट करना हो उनको पेपर सबमिट करते हैं, they verify, and then if they are satisfied, the company gets listed, and then it becomes a stock. Okay, and then afterward they also are liable to show their profits, losses, they are traded, people, anyone can invest in them and all those things. Okay, so they get the access to funds. So that's the major reason for any company to get listed. Okay, और कोई रीजन नहीं होता है, that's the major reason. ठीक है, फिर आपका आता है डेरिवेटिव्स. डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? डेरिवेटिव्स आपका, अब डेरिवेटिव नाम से आपको क्या लग रहा है? People who know English and they Derived can from something. सर किसी से वैल्यू डिराइव करते हैं. एग्जैक्टली, मतलब डेरिवेटिव्स का मतलब क्या होगा? वो किसी एक अलग चीज पे डिपेंडेंट है, किसी एक चीज पे डेरिवेटिव मतलब हुआ कि एक कोई चीज एक्स है जो वाई पे डिपेंडेंट है, उसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं है. ओके, वो होते हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस. फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में आपका, आप लोग रोज ही ट्रेड करते हो बट आपको आइडिया नहीं है. ठीक है, सो कोई भी स्टॉक जो होता है, ठीक है, वो आप खरीद के इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए रख सकते हो. फिर आता है आपके डेरिवेटिव्स. डेरिवेटिव्स का मेनली बिगिनिंग क्यों आता है, स्टार्ट क्यों आता है? इट वाज जस्ट started as a method to hedge your risk. That's why derivatives came into picture. Derivatives पहले नहीं हुआ करते. Derivatives सिर्फ इसलिए आए ताकि आप मार्केट में अपने जो रिस्क है उसको हेज कर सको. ओके, वो जैसे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस हो गए, डिटेल में हम आगे बात करेंगे क्या होता है फ्यूचर्स, क्या होता है ऑप्शन. बट बेसिकली ये समझ लो कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की खुद की कोई वैल्यू नहीं होती है, उनकी वैल्यू डिराइव होती है. ठीक है, डिपेंड करती है उनकी अंडरलाइंग पर. अंडरलाइंग हो गया आपका जो भी ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट है. अब इस केस में हम स्टॉक्स की बात करें, करेंसी हुआ तो करेंसी हो जाएगी अंडरलाइंग, कमोडिटी हुआ से गोल्ड हुआ तो गोल्ड हो जाएगा अंडरलाइंग, गोल्ड का फ्यूचर ऑप्शन हो गया. क्रूड हुआ तो क्रूड हो गया आपका अंडरलाइंग, और आपका क्रूड का फ्यूचर एंड ऑप्शन हो गया. ओके, सो डेरिवेटिव्स डिराइव देयर वैल्यू फ्रॉम these particular underlying or the traded instruments. Okay, or the asset classes. Okay, in fact आपका रियल स्टेट का भी डेरिवेटिव होता है. Okay, very, but it's not traded on exchanges, so most of you don't know about it. Okay, ठीक है, फिर आते हैं आपके इंडाइसेस. इंडाइसेस क्या हो गए? ठीक है, अब इंडाइसेस देखो, इंडाइसेस क्या है? कलेक्शन ऑफ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स. यहाँ पे मैंने स्टॉक्स लिखा है बट नॉट नेसेसरली स्टॉक्स. ओके, कोई भी इंडेक्स क्या होता है? कोई इंडेक्स को जैसे, अब जैसे आपका वो हाउसिंग का भी इंडेक्स है, ठीक है, जो कि हाउसिंग मार्केट के बारे में बात. तो इंडेक्स मतलब होता है किसी भी एक पर्टिकुलर चीज, कोई भी चीज हो सकती है. जैसे आपके, इनफैक्ट इंडेक्सिंग आपके ऑफिस में भी यूज होती है. इंडेक्सिंग आपका कंप्यूटर यूज करता है. ठीक है, फॉर टू फाइंड डिफरेंट फाइल्स, द कंप्यूटर indexes each of your files, keeps it so that it is easily searchable. इंडेक्स मतलब एक तरह से कलेक्शन किसी एक पर्टिकुलर टाइप के आइटम्स का. ठीक है, Say list of X category. what? List of X category. Yeah, list of anything, of similar type. Okay. तो किसी एक सिमिलर टाइप की चीजों का कलेक्शन जो होता है उसको आप इंडेक्स बनाए. इंडेक्स को आप क्या होता है इंडेक्स में? एक चीज क्या होता है, इंडेक्स ऑल्सो डिपेंड करता है वो पर्टिकुलर कलेक्शन पे. वो जो कलेक्शन का है, अब इंडेक्स आप कई तरीके से बना सकते हो. वेटेड, ठीक है, नॉर्मल एवरेज, वेटेड एवरेज, जैसे भी. ठीक है, तो अब जैसे निफ्टी हो गया. निफ्टी क्या है? निफ्टी के 50 स्टॉक्स हैं निफ्टी में. ठीक है, सो निफ्टी का जो आप वैल्यू देखते हो ना, 14,000, 15,000. आप जैसे कई लोग बोलते हैं ना, सर आप निफ्टी में वॉल्यूम नहीं दिखता है. क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि निफ्टी तो इंडेक्स है ना यार, निफ्टी ट्रेड थोड़े ना होती है. ठीक है, निफ्टी की तो बस एक वैल्यू है 14,000, 15,000. वो 14,000, 15,000 कैसे आए? वो 50 स्टॉक्स जो निफ्टी में है, ठीक है, उनसे आया. ठीक है, अब जैसे एच डी एफ सी बैंक का कोई एक शेयर प्राइस है 1400 समथिंग, उसका वेटेज है से 10%, तो निफ्टी में वो कितना करेगा? 1400, मान लो 5 रुपए बढ़ा HDFC बैंक, तो 5 रुपए इंटू 10%, तो निफ्टी में वो उतने 2 रुपए का चेंज आएगा. इंडेक्स कैसे कंस्ट्रक्ट हुआ? ये पूरा वेटेड मीन निकाल के. ठीक है, वेटेड मीन बोले तो व्हाइट बोर्ड शेयर कर सकते हैं क्या इसमें? सर एक स्मॉल डाउट है. हाँ हाँ बोलो. सर जब हम इंडेक्स का फ्यूचर खरीदते हैं तो एक्सचेंज उस पैसे का करता क्या है? वो क्या हमारा पैसा लेके स्टॉक्स खरीद कर रख लेता है बैकग्राउंड में? नहीं 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 नहीं, वो तो इंडेक्स, फ्यूचर क्या होता है? फ्यूचर और ऑप्शन तो एक्सपायरी होती है ना उनकी. वो आप खरीद के रख, हमेशा के लिए तो रख नहीं सकते. उनका तो एक, आप खरीद रहे हो तो कोई बेच भी तो रहा है ना. ठीक है, तो उसमें एक्सचेंज कुछ नहीं कर रहा है. आपने खरीदा, किसी और ने बेचा, आप दोनों को
एंड ऑफ द डे एक्सपायरी वाले दिन जिसने बेचा है उसको वापस खरीदना है, जिसने खरीदा उसको वापस बेचना है, तो हो गया पूरा जीरो। ये किसी के पास जा तो रहा नहीं है, जीरो सम गेम। राइट। इसमें तो कुछ करना ही नहीं है ना। स्टॉक में होता है ना, स्टॉक में क्या होता है कि अब इतनी ही फ्लोटेड नंबर ऑफ शेयर हैं। HDFC आप जाओगे मनी कंट्रोल पे देखो कितने शेयर्स हैं, तो उसके टोटल नंबर ऑफ एक शेयर्स हैं, ठीक है। उससे ज्यादा ट्रेडिंग किसी दिन वॉल्यूम हो ही नहीं सकती, बट फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में वॉल्यूम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अभी गेम स्टॉक में जो हुआ था, गेम स्टॉक का जो प्राइस बढ़ा था वो इसीलिए तो हुआ था, स्टॉक नंबर ऑफ स्टॉक्स जो थे, ठीक है, वो एक्स थे, और जो नंबर ऑफ डेरिवेटिव्स थे, फ्यूचर्स था, वो एक्स से ज्यादा हो गया था, राइट। अब वो जब एक्स से ज्यादा हो गया और लोगों की जो जिन लोगों ने स्टॉक रखा था, जितना स्टॉक था नहीं उससे ज्यादा शॉर्टेड था, तो लोगों की फटी, लोगों ने खरीदना शुरू किया, शॉर्टर्स ने पूरा, और जब खरीदना शुरू किया तो भागा ऊपर, ठीक है। तो हाँ हाँ या तो जब रेगुलेटरी एजेंसीज को पता है कि देयर इज ओनली एक्स अमाउंट ऑफ शेयर्स फ्लोटिंग इन द मार्केट, तो फ्यूचर्स शुड बी इक्विवेलेंट टू दैट ना, तो हाउ so यार अब that is a different discussion. अच्छा, It's- but I ideally it cannot- should be that, right? No, Ideally no, no. It's, no. there is nothing like ideal. See, the whole point of having futures and option is to, hedge it. Okay, now we are trading it to make money, and everyone loves money. The more you trade, more money exchanges are also making by the way of. See, why should they do that? That is the risk people are taking. Okay, if you are going on shorting, that is your fucking risk. Why should exchange bother? Exchange is getting the money on each of your transactions. सेबी हैज एन ऑप्शन दैट आप जिसमें सबसे ज्यादा वॉल्यूम होता है 95 के अबाउट, उसको ब्लॉक कर दिया जाता है 2-3 दिन के लिए ऑप्शंस इन फ्यूचर में। या वही तो होता है ना भाई, एक बार ओपन इंटरेस्ट पहुंच जाता है एक पर्टिकुलर लेवल पे तो दे ब्लॉक इट या, बट दैट्स नॉट इन यूएस। हाँ Yeah, sorry to interrupt here. So can we stick to basics things so that because this conversation and question can go on. Yeah, exactly. So please. No issue, sir. Yeah, so this is the basic of what is stock market, what are the different components. Okay, like for example Nifty Auto. Okay, Nifty Auto is just a collection of the auto stocks, okay, which form the part of Nifty, not all auto stocks. Okay, so similarly indexes are like pharma and all. अब index का use आप क्या कर सकते हो, like in trading में कैसे use कर सकते हो, actually ये सब मैं advance में cover करने वाला हूँ, just let me give you brief idea. Say for example you want to see what stock to buy, what to sell. Okay, say for example आपको लग रहा है कि Divi's Lab is giving a breakout, it looks good, you should buy, low पे reversal आ सकता है, और आपको सोचना है कि हाँ Divi's Lab खरीदना है कि नहीं खरीदना, तो पहले आप जाओ pharma देखो index. When you go and see pharma index and you see that the index is also going up, okay, in that case you can assume ki, I can go and buy Divi's. Okay, but if you see that the index is not doing good that particular day, then you should avoid, because if the whole index is not doing good, higher chances are that that particular stock of that index will also not do good. Okay, so that's how you can use these indices in your trading decisions. Okay, तो मतलब कोई भी ट्रेडिंग yeah, just one small question after. So index basically are collection of stocks. We can say that particular index is defining those set of stocks. Now if when we are talking about the derivatives of an index, so the underlying will be that particular index, but index individual does not have any value. The value we have only for the stock, right? So how can we have the concept like index can have the derivatives? Like, can you explain on that part? Yeah, obviously डेरिवेटिव्स प्राइस, यहाँ पे देखो जो भी आप निफ्टी की वो लेवल देखते हो, ठीक है, देखो स्टॉक में आप बोलते हो प्राइस, निफ्टी पे वो होता है लेवल. ओके, दैट लेवल इज जस्ट टोटली ट्रांसफॉर्म टू प्राइस इन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस. ओके, नाउ इंडेक्स डिराइव्स इट्स वैल्यू फ्रॉम दोज स्टॉक्स. ओके, एंड देन डेरिवेटिव्स डिराइव देयर वैल्यू फ्रॉम द इंडेक्स. दैट सिंपल. ओके, इसमें और ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है. इंडेक्स का जो भी प्राइस इंडेक्स आया आपका, लेवल आया इंडेक्स का, वो कैसे आया, जैसे जैसे स्टॉक्स फ्लक्चुएट हो रहे हैं, पीछे आपके एल्गोज चल रहे हैं, दोज एल्गोज आर डिसाइडिंग ओके फॉर ईच मूवमेंट ऑफ 5 rupees in HDFC, this is the difference in Nifty. Each movement of Sun Pharma of 2 point, this is the difference, and all of that is getting calculated in real time, and that is getting reflected in your index. Okay, all of it, just like जैसे ये क्वेश्चन होता है ना कि मुर्गी
पहले आई कि अंडा पहले आई, जस्ट लाइक दैट। ओके, बोथ आर इंटरडिपेंडेंट। ठीक है, इंडेक्स की जो भी वैल्यू आई वो यहाँ से आई स्टॉक्स से, और जैसे ही इंडेक्स की वैल्यू आ गई उसके बेसिस पे आपका डेरिवेटिव्स आ गए। ठीक है, जस्ट दैट सिंपल। चलो गाइस, मूविंग अहेड। ओके, ओके, सो अब नेक्स्ट, अब मार्केट में क्या क्या पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी बात करते हैं। ठीक है, मार्केट में कौन कौन लोग हैं। ठीक है, क्योंकि जो लोग हैं उन्हीं के बेसिस पे डिसाइड होता है भाई मार्केट का मूवमेंट। ओके, सबका मार्केट में क्या है, कलेक्टिवली हजारों लोग की जो सोच होती है वो रिफ्लेक्ट होती है प्राइस पे। राइट, जो लाखों करोड़ों मार्केट के पार्टिसिपेंट्स हैं वो क्या सोच रहे हैं, क्या सोच के खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, वो पूरा रिफ्लेक्ट होता है आपके प्राइस पे। ओके, ऑल द कलेक्टिव इमोशंस, थॉट प्रोसेस एंड ट्रांजैक्शंस of each of the market participants gets reflected on the price. So to understand the movement of a stock or a derivative or an index, it is very important to understand how each of this market, who are these first market participants, that we have to understand कौन कौन है ये लोग जो मार्केट में है। ठीक है, मेजर कौन कौन से ग्रुप हैं, and what is their power, okay, and how they think. Okay, if we understand that, then we can predict the movement or at least have a fair idea how a stock or index will behave. Okay, so keeping that in mind, these are the four major market participants in the market. Okay, सबसे ऊपर आपका मैंने रखा है FII, फिर रखा है DII, फिर प्रो क्या, प्रोफेशनल ट्रेडर्स और PMSs। ओके, और PMS हो गया प्रोफेशनल ट्रेडर, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, HNIs जो हो गए। ओके, ग्रुप ऑफ HNIs एंड ऑल, एंड देन रिटेल, me and you. Okay, these are four types of market participants in the market. Now if you see FIIs, okay, they are considered as most powerful. Now why I'm keeping FIIs above DIIs? Any idea, guys? They have most money because they invest in a They are dollar coming in or the bulk. The They foreign also invest in investment. foreign a lot of money to invest. foreign currency. Foreign currency. They are foreign investment like hedge funds and big banks which are in foreign which invest in Indian market. No, Can you please no. brief out this? The foreign is Their FII? contribution is high. Those- Their contribution is lot more than others. No, not that. See, Volume, they have lots of money. no, Create that a is volume. also not right. See, I'll tell you Sir, what is why FIIs are more powerful. Sir, explain. The FII sir, थोड़ा और Sir, it's the explain कीजिए. response to a server market. Okay, let me explain now. Okay, see, FIIs are more powerful. Why? Because their contribution to the market most of the time is in a collective way. ठीक है, अब देखो फॉर एग्जांपल DIIs देख लो आप, स्टेट बैंक म्यूचुअल फंड जितने भी स्टेट बैंक के हैं, SDFC के हैं, ठीक है, these are all DIIs. ओके, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ओके, FIIs में क्या है, मेन सिटी बैंक हो गया आपका। ठीक है, दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट FII इन इंडिया एज ऑफ नाउ। ओके, सिटी बैंक हो गया, स्टैंडर्ड चार्टर्ड है। ठीक है, एंड सिमिलरली अदर्स। बट FIIs मोस्टली यू लुक एट FII डेटा, वाई, फॉर टू रीजंस। होता क्या है कि these FIIs आर पीपल हु इन्वेस्ट इन वेरियस मार्केट्स। ओके, सिर्फ इंडिया में तो इन्वेस्ट करते नहीं है, अलग अलग जगह करते हैं। ठीक है, सो दे कीप एन आई ऑन ग्लोबल मूवमेंट की, ग्लोबली US में क्या हो रहा है, रशिया में क्या हो रहा है ना। DIIs का क्या है, वो सिर्फ इंडिया पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, अब जब FIIs इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं तो उनका सबका एक सिमिलर व्यू होता है। ठीक है, सो ऐसा होता है कि जैसे सिटी बैंक अगर इन्वेस्ट कर रही है तो सिर्फ सिटी बैंक अकेले नहीं कर रही है, इट्स लाइक सिटी बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड एंड ऑल द FIIs आर टुगेदर पुटिंग मनी। ओके, सिमिलरली व्हेन they exit also together. So होता है कि उनका जो इम्पैक्ट होता है मार्केट पे वो इसलिए पावर ज्यादा होती है बिकॉज दैट इज कंसंट्रेटेड। DIIs में क्या होता है कि आज SDFC म्यूचुअल फंड ने से खूब सारे एक्सिस बैंक के उठाए, बट हो सकता है SBI ने सेल किया हो, राइट। सो दो DIIs का जो वॉल्यूम है और पावर है इन टर्म्स ऑफ मनी, दैट इज इक्वल टू FII। ऐसा नहीं कि SDFC या SBI के म्यूचुअल फंड की वैल्यू या उनके पास जो पैसा है FII से कम है, नहीं, इक्वल है। बट उनका कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होता है, अलग अलग होता है। SDFC कुछ कर रही है, SBI कुछ कर रहा है, ICICI कुछ कर रहा है, सो उनका इम्पैक्ट भी होता है ज्यादा।
बट ऑन एन इंडेक्स लेवल उनका इम्पैक्ट ज्यादा नहीं होता है मोस्ट ऑफ टाइम, बिकॉज वो अलग तरीके से सोच रहे होते हैं, सबका अपना अलग अलग तरीका है करने का, इसलिए। ठीक है, सो दैट्स व्हाई एफआईआई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, फिर डीआईआई इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। प्लस एफआईआई के साथ एक और चीज क्या होती है, वन मोर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज दैट FIIs give you an idea about what is going globally. Okay, now DIIs, they have only one market, India, to invest. So if they are investing, there is nothing new. If they are not investing, it's like they are sitting waiting for something. But the action of FIIs tells a lot of things. If they are pulling money out of India, okay, it says something, because India is an emerging market. If they are pulling out money, that means that okay, that's a kind of a message that okay, they think that the emerging markets are not going to do good. Okay, they are going to put money inside developed market. So the messaging also from FIIs is very important, and cause of that, the domestic institutional investors and other people also, they give more importance to that, and they also act in response to that. So the whole effect of an FII decision or transaction gets down to the bottom of each and every one. आप मैं सब सारे लोग देखते हैं कि FIIs क्या कर रहे हैं, accordingly we take out trading decisions. So that gives them a lot of power, and that's why I've kept them at top. फिर आपका like DIIs are there, they are mostly mutual funds houses, various mutual fund houses, जो कि अलग अलग अपने अपने फंड के अकॉर्डिंग, अब फंड्स में रूल्स होते हैं, ओके, कि अब आप हर महीने SIP कर रहे हो, देयर इज अ रूल ऑफ एक्सचेंज कि यहाँ इतना पैसा डालना ही है मार्केट में, इतना तुम रख सकते हो। ओके, सो बेस्ड ऑन दैट, each of the fund, based on that, they make a decision when to buy, when to sell, where to buy, where to sell. Okay, so they do all that, and since they have a lot of money, they are very powerful. Next comes your professional investors, PMSs. Okay, now PMSs are like, there are various PMSs. Now they are like, they have money from high net worth individuals. जितने भी HNIs होते हैं, they go give, say Axis Bank को गए 50 लाख दे दिए कि हाँ भाई तुम कल से मेरा देखो. So Axis Bank invests accordingly. So they have a collection, but that money is not so much as compared to FIIs and DIs. But उसका फायदा क्या होता है, अब इनका भी कहाँ पावर आता है, concentrated होते हैं. Okay, because they buy concentrated in a concentrated way. तो जो आप ये देखते हो ना, स्टॉक्स होते 10%, 15% बढ़ गए, सर्किट लग गया, 4 दिन 5 दिन लगातार सर्किट लग गया. These are mainly because of these professional investors. Okay, they cannot move indices. Indices they cannot move. They do not have so much power that they can move indices, but they have good money and good influence on these one single or two, three stocks, and that's how they behave. Okay, so whenever you see some 5%, 10% movement in a stock, you can very well go and invest in for next 2 weeks or 3 weeks, because it means that these are being bought by these particular PMS houses, and that momentum should continue for next 5, 6, 7 days. It may continue, but once you start seeing a lower circuit again, you should exit, because the way it moves up, that same way it comes down, because then again these are the people who start taking out their money, और फिर वो गिरने लगता है. ठीक है, फिर आते हैं हम लोग रिटेल वाले, जो sorry to interrupt. How do we spot, would you cover this later, or go ahead? How do we spot that FIRs are buying? Would you cover this topic later? I mean, yeah, we'll cover that, but mainly that we'll cover it not in beginners, we'll cover that no in problem. intermediate and No advanced. problem. Okay, No problem. सर No problem. Go ahead. सर ये जो मतलब ये फॉरेन होते हैं और ये डोमेस्टिक होते हैं, मतलब फॉरेन से हमें ये भी कैसे पता लग सकता है कि वो बाहर की तरफ जाना चाह रहे हैं और इंडिया में मतलब निकाल रहे, तो डाउन साइड भी आ सकता है. exactly, yeah. तो So मतलब that's what. सर DII से मतलब क्या क्या होगा, मतलब DII मतलब सिर्फ इंडिया में ही रहते, बाहर में नहीं करते. हाँ, DII is domestic institutional investor. See, you cannot invest outside. मैं जाके कल को US stock market में invest नहीं कर सकता हूँ directly. Okay, I cannot open an account like Zerodha में कल को Amazon खरीदने लगा, not possible. Okay, you have to go through a particular channel. Okay, so अब US के लिए जहाँ से इंडिया के मैं हूँ, जैसे Vested is one platform. Okay, जहाँ पे you can buy US stocks. Okay, so बहुत सारे लोगों ने Vested में से इन्वेस्ट किया, तो Vested भी किसी से लिंक्ड होगा, ठीक है, and that person would be buying things from US market. So Vested becomes kind of an FII for US market. Okay, so Sir, similarly, difference.
डिफरेंस क्या होगा कि मतलब अगर हमें फॉरेन वाले को और हमारे नॉर्मल प्रो ट्रेडर को अगर कहते करना हो, मतलब फॉरेन और जो FII और DII वो मतलब बहुत हाई वॉल्यूम करेंगे या देखो प्रो वाले volume ज्यादा? wise both are same. Okay, you cannot make, by seeing volume you cannot make out, okay, कि whether this is being invested by an FII or a DII. That is not possible. Okay, because volume में सिर्फ volume दिखता है, ये थोड़ा ना दिखता है कि FII कर रहा है कि DII कर रहा है. You never know unless only you know if an FII is investing or a DII is investing. There are only two ways. One is either you go sit in the dealing room, ठीक है, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का डीलिंग रूम है और NSE का डीलिंग रूम है दिल्ली में. आप दोनों जगह बैठो, दो अपने बंदे लगाओ वहां पे, इधर वो आपको खबर देते रहे कि हाँ आज ये बंदा आया, इसने इन्वेस्ट किया. दैट इज द ओनली वे फॉर यू टू नो इफ एन FII is investing or not. Okay, or you wait until end of the day, NSE will give you data, how much has FII is invested, how much has DII is invested, what are the block deals, they will update, and then you get to know. That is the only way. There is no other way to know if. So they come physically. सर FII और DII के पास ऐसा क्या इंफॉर्मेशन और क्या टूल होता है जो रिटेल इन्वेस्टर के पास नहीं होता? हाँ सर, एग्जैक्टली वो That is स्पॉट कैसे market करते news. हैं? Okay, so see, first of all, FII, okay, एक और चीज आप लोग को फिर समझाऊं. देखो मार्केट में एक होता है मार्केट मेकर, ओके, और फिर होते हैं बाकी लोग हमारे जो हम लोग होते हैं. मार्केट मेकर क्या होता है? ही मेक्स द मार्केट. FIIs and DIIs make the market. Okay, we just follow them. We do not decide where the market is going. FIIs, DIIs, they have a lot of money. They have all the resources. Okay, they have people working around the clock to tell them how is the economy going to, behave. How is a particular stock going to behave? Or what is they value? Okay, they see a stock's valuation, and based on their valuation, they decide ki whether they should invest or not. If an FII believes that, like people say na कि अरे यार डीमार्ट बहुत महंगा हो गया, अब नहीं खरीदना चाहिए. Who the fuck are you to decide कि डीमार्ट महंगा हो गया? डीमार्ट, if it is going up, it's because the FIIs are believing and the DIIs, the bigger people are believing that yeah, it has still value. Okay, and that's why it is they are investing and it is going up. You should then not go against it. Similarly, saying March se abhi the economy was looking bad, but stock market made an all-time high. Why? Because people, these people, the market makers, they saw an opportunity. They said ki, okay, this is a time being, it's a thing of time being, that the economy is down, but India will come back, and they'll see. Market is always forward looking. Okay, people say na ki इकोनॉमी में सब खराब चल रहा है, या जैसे कोरोना चल रहा है अभी भी, यार अभी थर्ड वेव आ सकती है, सब खुला भी नहीं, मार्केट क्यों ऊपर जा रहा है? क्योंकि यार market is always forward looking. It is not, it doesn't reflect the state of the economy at present. It reflects the state of the economy in future. Okay, 5 years down the line, 10 years down the line, and 5 years down the line India looks good, and that's why the market went up. Okay, FII और DII के पास ऐसा कौन सा इंफॉर्मेशन या कौन से टूल होते हैं जो रिटेल के पास नहीं होते? उनके पास सब इंफॉर्मेशन होता है, रिटेल के पास कुछ होता है. ओके, अब फॉर एग्जांपल, चलो मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ. स्टॉक्स जो होते हैं, से रिजल्ट आता है PNB का, आपको कैसे पता चलता है PNB का रिजल्ट? आप जाते हो वेबसाइट पे, आप न्यूज चैनल्स पे देखते हो, कॉन्फ्रेंस पे देखते हो, राइट? दैट्स व्हाट यू गाइस डू. मैं यूट्यूब लाइव करता हूँ, आपको 10 सेकंड का डिले मिलता है, राइट? सिमिलरली ऑल दीज न्यूज चैनल्स एंड ऑल दिस मनी कंट्रोल एंड ऑल, वहाँ पे जो भी न्यूज आता है कि स्टॉक्स का ये रिजल्ट एंड ऑल, उसको आने में टाइम लगता है. FIIs, they know it in real time because they have their people sitting. Many of them are promoters, so then they themselves know. Okay, so it's not only about information, it's about speed of information. The speed with which they get the information, the speed with which we are dependent on various sources to get the information. They have first-hand information. Okay, so that's the difference. Not only about उनको क्या information मिलती है आजकल. आज से 15-20 साल पहले it was difficult for a retail investor, to get information, but right now it is not that difficult. Okay, right now. Ashutosh, I have a query. Why do FIIs invest only in a single tandem? You said कि एक ही तरीके से invest करते हैं, वो भी तो different fund houses होते हैं. So why do they invest with a single mindset only or singular thought only? Because see, when you talk about an FII, they don't come and buy your penny stocks. Okay, they buy for India. They see the way they look and the way we look, it's very different.
When an FII comes to India, he invests in India growth story. He doesn't look at HDFC Bank. So where he invests, for example, MSCI index में कोई stock add होता है that starts running. Why? Because जैसे mutual funds होते हैं आपके, see, तो large cap fund So हुआ because तो they are active, they are passive investors in the entire index. no, not like that. See what happens. Like for example, your mutual fund is there, large cap is there. Okay, so when mutual fund registers for a large cap and he says, okay, these are my particular stocks and this is my methodology of investing, then they are bound that whatever money they get and whatever is the however is the market, they have to invest in that particular fashion and that particular percentage. Okay, they cannot do it in any other way. Now, Nifty 15, whenever a stock comes, that goes in the MSCI index. So MSCI index को सेम बनाए रखने के लिए इंडेक्स कैसे बनता है? अगर मान लो कोई स्टॉक उसमें ऐड हुआ, उसकी वैल्यू कम रहेगी तो इंडेक्स गिर जाएगा. सो इंडेक्स को मैनेज करने के लिए यू हैव टू पंप मनी इन दैट पर्टिकुलर स्टॉक. So all that money from these foreign investors flows directly there. See, FIIs are not sitting like us on a computer, buying and selling. Okay, they invest in block deals, bulk deals. Okay, and they have, say, brokers like Thomson. Okay, so for example, Thomson will come and invest. So Thomson will have a group of 10 FIIs. They will come to Thomson. They will say, okay, this particular stock has been added in Sun Pharma, so MSCI index को balance करना है. So all the money has to go there. So they will invest in MSCI invest in Sun Pharma, and then Sun Pharma will rocket. Okay, so that's how they invest, and that's why their investing is concentrated. FII have the power to make the market, but still they don't make more than 15% of the सर वॉइस में इशू आ रहा है. तो मेरा नहीं है, किसी और का है, जिसने भी सर FII के पास पूरा पावर होता है मार्केट को मूव करने का, लेकिन स्टिल दे डोंट मेक मोर देन 15% इन ईयर. Who said that? Do you have any data for whatever you just said? I heard any expert. No. So don't hear. If you just say things which you have data. Okay, nothing like that. सर मोस्टली हमने देखा है कि FII और DII का डे एंड के बाद जो भी डाटा होता है, एक खरीदता है, दूसरा हमेशा बेच रहा होता है. बेचता है, हाँ. No, जरूरी नहीं है. इट्स वेरी रेयर कि वो दोनों एक डायरेक्शन. No, जरूरी नहीं है, एकदम गलत बात है. जरूरी नहीं है, बट यूजुअली देखा है. नहीं भाई, ऐसा जरूरी. आप देखो, जून का महीना देख लो, मई का महीना देख लो. FIIs ने अराउंड 9600 करोड़, मेरे को याद भी है, 9600 crore FIIs have sold. DIIs have just bought 600 crore. All the 9000 crore has been bought by retail and professional investors. Go and see my data. Whole of May. सर इसे हमारे टर्मिनल पे And एक और एग्जांपल देता हूँ. मार्च का डेटा देखो, ठीक है. मार्च में everyone was selling, and that's why market went so down. Okay, see, 2018-19 का जो period था, in that if you see, FIIs were pulling out money constantly and DIIs were pumping money. Why DIIs were pumping money? Because their DIIs mostly mutual fund houses हैं, and mutual fund houses are bound by law that whatever money they will get, a certain percentage only they can keep, rest they have to invest. Okay, they cannot keep it to themselves. So अब SIPs हर महीने आ रही हैं, पैसा उनके पास आ रहा है, तो उनकी मजबूरी है उन्हें इन्वेस्ट करना है. ओके, बट तभी FIIs पैसे निकाल रहे थे, तो दैट वाज गिविंग एन इंडिकेशन कि हाँ भाई, दे डोंट फील that India's growth story is tight or it is right on a right direction, and that's what happened later. We all came down. Okay, so does it also depend on the USD fluctuations? Say, for example, if the rupee is weak, then probably they will invest more. Does it depend on that as well? See, obviously, a dollar at the end of the day determines every action. Okay, dollar at the end of the day is the god. Okay, that only determines everything. Sir, what is tick by tick data which is not free, and what is the data which is shown on the Zerodha? अरे यार वो सब छोड़ो, उसकी वो जान के क्या करोगे? टिक बाय टिक डेटा क्या हो? टिक बाय टिक डेटा जो तुम्हें मिलता है ना, हर समय जो प्राइस देखते हो ना, एक हर सेकंड चेंज होता है, वो टिक बाय टिक डेटा होता है. वही, ठीक है, हर सेकंड जो चेंज होता है. टिक बाय टिक डेटा मतलब हुआ कि जरूरत है तुम्हें वो हर चेंज दे. दैट इज वेरी कॉस्टली. व्हाट विल यू डू विद दैट? एक सेकंड में 4 होते हैं, आई गेस. I'm sorry to be interrupting, but can we proceed with the class? Yeah, I will proceed. I mean, too many questions. It's a beginner's class. Yeah, we don't want so much of it. Exactly. Please mute कर लो सबको. आप अपना class पहले clear करो, please.
बिगनर से कुछ ज्यादा ही ऊपर चला गया था ऊपर से anyway, यार आप पूछोगे तो मैं बता ही देता हूँ। anyway, लेकिन ठीक है, सच्ची let's में move कुछ on. समझ नहीं आया लास्ट सर एक वाला। लड़का बाहर हो गया है मीटिंग से, तो आप उसे वो कर सकते हो, रिकनेक्ट कर सकते हो। हाँ गौरव चौहान। गौरव, हाँ, I'm just reconnecting गौरव. ओके सर, थैंक यू। No issue, sir. ज्यादा ही बाहर चला गया टॉपिक। हाँ, सो अब चलो यार, ये तो चलो हो ही गया, अब इस पे और क्या बने रहते हैं, फिर नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, काफी हो गया इसमें। अब देखो टेक्निकल एनालिसिस पे आते हैं। ठीक है, एक मिनट, ग्रुप पे क्या मैसेज आया है? Just hold on a minute, guys. Just give me a minute. Let me just. So what is MSI, if you can explain? It's just an index, okay, which mimics India growth story, okay. बाकी गूगल कर लो, none of it's not that important. अब मतलब important है लेकिन not for this class, okay. You can Google it. It's just an index, okay. Thank you. Anyway, now let's talk about technical analysis. अब technical analysis क्या होती है? Technical analysis, first of all, it has nothing to do with a stock, a company's profit. It has nothing to do with management, okay. सर प्लीज बी लाउड, थोड़ी आवाज कम आ रही है, सुनने में इश्यूज हो रहा है। अभी ठीक है? हाँ प्रॉपर है। Okay, so technical analysis has nothing to do with the fundamentals of stocks, means उसकी profitability, okay, how the operators नहीं बोलूँगा, how the management is working, okay. It doesn't care about all of it. टेक्निकल एनालिसिस बस सिंपल सा एक काम है कि वो पास्ट को देखता है स्टॉक्स का, ठीक है, पास्ट में क्या चल रहा है, एंड बेस्ड ऑन दैट पास्ट, ओके, इट हेल्प्स यू प्रेडिक्ट द फ्यूचर. इट्स जस्ट लाइक व्हेन यू आर क्रॉसिंग अ रोड, ओके. जब आप रोड क्रॉस कर रहे हो, सामने से उधर से आपकी एक गाड़ी आ रही है, तो आपको पता थोड़ा ना होता है कि वो गाड़ी की हॉर्स पावर कितनी है, या गाड़ी के ब्रेक्स कैसे हैं. यू डोंट केयर अबाउट ऑल ऑफ दैट. यू जस्ट सी कि हाँ उसकी स्पीड इतनी है, ये है, तो फिर आपका दिमाग में एक कैलकुलेशन आता है, आपको लगता है हाँ आई कैन क्रॉस द रोड, एंड यू जस्ट क्रॉस, okay, because you predict हाँ I'll be able to cross before it reaches. That's what technical analysis also. It doesn't care about the fundamentals of the stock. It just cares how it has behaved in past, and based on that, okay, it predicts the future, okay, कि क्या future में हो सकता है. अब that past behavior can be market psychology, behavioral economics में होती है, वो सब इतने डिटेल में हम नहीं बात करेंगे. Quantitative analysis mainly we will talk about, and things about charts and reading, that's what we will talk about. Other aspect will not cover here, okay. यूज क्या होता है टेक्निकल एनालिसिस का? एंट्री और एग्जिट डिटरमिन करना ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट का. दैट इज द ओनली यूज ऑफ द टेक्निकल एनालिसिस, ओके. कंटेंट उसमें क्या क्या चीजें होती है, चार्ट्स होते हैं अलग अलग टाइप के, और इंडिकेटर्स होते हैं, ओके. अब वो हम नेक्स्ट स्लाइड्स में वो हम डिस्कस करेंगे. जस्ट मुझे 2 मिनट दो यार, थोड़ा कुछ पीने को लेके आऊं मैं, ओके. जस्ट गिव मी 2 मिनट्स. Hey guys, it's just a suggestion. So I know this is beginners class, so everyone is equally excited about it. Everyone has got so many questions, but since looking at the time frame, can we just have these questions at the end, or we can just send an email or chat on our group? That would be really helpful. Definitely, man. Guys, just 1 minute दो यार, my wife is Yes, not absolutely coming. true. It is really annoying. हाँ यार, कभी कभी ऊपर से चला जाता है, बड़ा दुख होता है पढ़ाई Because करके। if it is open-ended, then we won't be sticking to our whatever is the motive of this class. Yes, Yeah, flow is also lost. There is, हाँ, So टाइम भी it's जाएगा, a, पता भी नहीं चलेगा, टाइम का it's पता ही just नहीं a चलेगा। request. So एक बार क्लास पूरी हो जाए उसके बाद में सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे लास्ट में। yeah, Swapnil, I give me a agree with minute. your suggestion, but the problem is that Ashutosh is hardly looking at the chats. no, Yes, I'm I'm saying not that actually looking we at the have a chats. group, right? See, we have a group, so we can ask these questions in our group, in Instagram group. Not right now, because even हाँ Ashutosh. बाबू कहाँ है? Yeah, sorry Ashutosh, go ahead please. अरे जल्दी है, मेरे को लगा पता नहीं कहाँ, क्लास में था, मैंने सोचा अभी बाहर आया, देखा तो आ ही नहीं अभी तक. The problem is that he does not have time to look at the chats or even the Telegram group. He's ठीक है. mostly हाँ, did you go and see focusing on the that? mains only. Did you go and see that?
Agree, but at least everyone has to, चल ठीक है, anyway, चल I'm everyone has continuing to, with the class, okay? admire चलो, that, bye bye. other people and their time also. That is एक second. नहीं, I am in the There should be class some already. optimization. I am in the All class right, only. let's see. Okay? That's fine. I think Bye. We everyone can has. have a separate Q&A session actually. But Hello basic. guys, let's continue. Okay, so Yeah, sure. Go ahead, let's please. move on. Okay, we Ashutosh, are one already. request. Maybe whatever content you have prepared, maybe let's let all of us listen to what you have to say, and then we will do all questions. This interactive thing is not working. It's Yes, more than yes, 1 yeah, hour. guys. That's हाँ, what ये I अच्छा want. That रहेगा you सर, guys ask क्वेश्चन question आंसर at बाद में last. करवाइए। Ah, वाला क्वेश्चन है यार, नहीं हो पाएगा please क्लास mute का वो all. चला जाता है। Please mute everyone. Yeah, go ahead sir, go ahead, you go ahead. Please mute everyone. Hello guys, I'll mute everyone. Okay, so let's move on. Okay, so now let's move to the next slide. Okay, what is technical analysis, man? Of technical analysis, you see these are the things that are covered. Okay, you have candlesticks. Okay, you have bar charts, you have point and figure chart, Heikenhashi line chart, Renko chart. ये इधर लेफ्ट साइड में सारे चार्ट्स हैं। राइट साइड में आपके क्या इंडिकेटर्स हैं, RSI, MACD, अलग अलग थ्योरीज हैं, एलियट वेव थ्योरी है, डाउ जोन्स थ्योरीज है, पाइवट पॉइंट्स है, CPR है, ठीक है। सो दीज आर different things which make up the technical analysis. Okay, now we'll talk about few of the things, not all of the things. We'll talk about few things just to give people a flavor and the basics. Okay, so let's move on. Next is charts. Let's focus on. Okay, so what are the major types of charts? So we have mainly 5 type of charts, but actually we have like 8 or 9 types of chart, but mainly I have divided into 5. Okay, one is line chart, the basic one. ओके, लाइन चार्ट क्या होता है बेसिकली, सिर्फ अब जैसे आपका ये कैंडल स्टिक होता है, कैंडल स्टिक में आपको 4 चीजें आपको दिखती हैं, ओपन, ओके, हाई, लो और क्लोज। लाइन चार्ट में सिर्फ एक पॉइंट को यूज करके चार्ट बनाया जाता है, ठीक है। विल गो एंड सी लाइन चार्ट्स। ओके, अभी हम ट्रेडिंग व्यू पे लाइन चार्ट देखेंगे, उसका यूज भी देखेंगे। देन देयर कम्स द बार चार्ट। ओके, bar chart में just like candlestick they also use 4 price points. Okay, open, high, low, close. Okay, and then candlesticks you all are aware about, ठीक है। फिर हाइकनाशी होता है। हाइकनाशी क्या करता है कि इंस्टेड ऑफ हाई, लो, क्लोज, वो क्या करता है, एक एवरेज प्राइस यूज करता है। उसका एक फॉर्मूला होता है विच विल कवर इन इंटरमीडिएट कोर्स। ओके, विल नॉट डिस्कस हियर। एंड देन रेंको आल्सो। रेंको क्या होता है कि इट डजंट कवर व्हाट टू से इक्विवेलेंट टाइम। व्हाट इज लुक्स एट इज कि एक पर्टिकुलर एक्स अमाउंट ऑफ मूवमेंट स्टॉक में हुआ, वो जितनी देर में हो जाए, आधे घंटे में हो जाए, 1 घंटे में हो जाए, अकॉर्डिंगली वो बार बनता है, ठीक है। वो भी हम इंटरमीडिएट में देखेंगे, उसका वैसे यूज नहीं है ज्यादा। हाइकनाशी थोड़ा हम डिटेल में इंटरमीडिएट में विल टॉक अबाउट बिकॉज इट्स बिट यूजफुल ऑन अ डे टू डे बेसिस। Renko is not used that much. Okay, then comes other charts like point and figure, Kagi, etc. Okay, so these are various types of charts. अब हम एक काम करते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल एक बार देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो लाइन ग्राफ है ये, इसका आप बताओ मेन यूज गाइस क्या होगा। इसका मेन यूज, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये अगर चार्ट देख के आपको क्या समझ में आता है, देन व्हाट यू गाइस विल से, एनीवन, what will you say after looking at this chart? It depends, closing it price, depends trend the line. movement of the ट्रेंड ऊपर है या ट्रेंड डाउन है। This will only tell whether it is uptrend or downtrend. एग्जैक्टली। सो अब ये देखो, ये इसमें सिर्फ एक लाइन ऐसे दिख रही है, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ या तो क्लोजिंग प्राइस या ओपनिंग प्राइस या हाई या लो, किसी एक पॉइंट को लेके ये लाइन बनाया गया। सारे ओपन 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 ओपन, हाई हाई, लो लो, कोई भी एक पॉइंट लेके डाला गया, ठीक है, वो कनेक्ट कर दिया गया, बन गया चार्ट, उसको बोलते हैं लाइन ग्राफ। You can use the pen here. Yes, There is an annotate, right? After pause fair. yes, there is. Okay, so we'll use that here when necessary, ठीक है। So the use of this particular chart is just to, it's a very simple chart, इसका सिर्फ एक यूज होता है to identify trend. Okay, half of the time we are all are like looking for trend नहीं दिख रहा, trend नहीं समझ में आ रहा, up trend है, down trend, use line graph chart. Okay, because it's very easy to make out। जैसे यहाँ पे आपको easily आपको समझ में आ जाए कि हाँ भाई this is a up trending market। Okay, जिसमें ये छोटे छोटे दो रिट्रेसमेंट है। Okay, so that's the only use of line graph. Okay, it's a very simple chart and you can make it for anything. Okay, then after line graph comes your bar graph. Bar graph is just like candlestick but it looks different. It also uses like 4 data points. So left में हमेशा ये जो left में आपको दिख रहा है, ये यहाँ पे मेरा कर्सर दिख रहा है आप लोगों को, ये जो लेफ्ट होता है ये आपका होता है ओपनिंग प्राइस। ओके,
ये आपका जो सबसे टॉप होता है ये होता है हाई प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइम। ये आपका जो राइट दिख रहा है, ये राइट में छोटा सा विक, ये होता है क्लोज प्राइस, और ये जो आपका लो। ठीक है। फिर जैसे देखो ये लेफ्ट में जो भी होता है ओपन प्राइस। अब देखो ये रेड कैंडल है क्योंकि ओपन देखो यहाँ पे है, और आपका जो लो है दैट इज लोअर देन क्लोज इज लोअर देन द ओपन, दैट्स व्हाई इट इज रेड। ओके, सो दिस इज ओपन प्राइस, अगेन राइट साइड में योर क्लोजिंग प्राइस, high of that particular time, low of that point. ठीक है, so it's just like candlestick chart, but this is not that much famous mainly because it doesn't look good. It looks very messy and it's very difficult for you to find out where is open, where is high, where is open and close. A bit difficult to spot it, just by looking. So that's why this chart didn't become so much famous with traders. Okay. Then after that comes the candlestick charts. Okay, these you guys are all aware about. Roji dekhte hum log. Okay, so again in candlestick charts you saw this is the high, this is the low. Okay, this is the close, this is the open. So here it is, this is the high, this is the close, this is the open, this is small low. Okay, so that's candlestick for you. Okay, then comes your Heikenasi. Okay, Heikenasi, like I said, it takes average price of a particular time. Like 5 minute candle में वो क्या करता है, average price निकालता है और उसका high low average देखता है ना। Heikenasi का भी सिर्फ एक ही यूज होता है, बेस्ट यूज जो Heikenasi का होता है इज टू स्पॉट ट्रेंड। देखो अब ये कैंडलस्टिक चार्ट देखिए, इतनी जब तक मूवमेंट आपका ऐसा ना हो, यू कैन नॉट मेक आउट वेदर इट इज ट्रेंडिंग और नॉट। Heikenasi, what it does, since it uses average price, it removes the noise of up low and gives you a clear cut trend कि हाँ भाई ये देखो अप ट्रेंड है, फिर यहाँ पे यहाँ कंसोलिडेशन हो रहा है, अप ट्रेंड, सेम ग्राफ, ये जो लाइन है ये सेम टाइम पीरियड का है। ठीक है, सो दैट्स द यूज ऑफ Heikenasi. ओके, देन यू हैव रेंको। रेंको में आपका टाइम पीरियड सेम नहीं होता है, बस रेंको में क्या होता है कि हर बार का लेंथ सेम होता है। आप देखो हाइट सेम है सबका ऑलमोस्ट। ठीक है, सो रेंको फोकस करता है कि एक पर्टिकुलर मूवमेंट ऑफ प्राइस से 5 रुपए की मूवमेंट कितने देर में आई। ठीक है, तो ये सब 5-5 रुपए की सेम मूवमेंट है। ठीक है, अब ये 5 रुपए की मूवमेंट आपका अगर मान लो 2 घंटे में आया, और ये 5 रुपए का मूवमेंट आपका ऐसे 2 मिनट में आया, सो यू लुकिंग एट दिस यू विल रियलाइज कि हाँ, the momentum is fast here, momentum is slow here. So that's the use of Renko, to kind of look at the momentum by looking at the time in which that much price is being done by the particular stock or commodity or whatever traded instrument. Okay, so that's the use of Renko. Guys, do you want me to show it on trading view or you guys can find it out? Please use trading view. Trading view. Okay, let me just show you guys. Okay. Bro, sometime you also use Heikenasi. Yeah, mainly to spot trend, like I said, no. So that's why I said I'll cover that in intermediate class because it's a bit important. Don't mind, can you please repeat the Renko graph once again? Okay, I'll just cover it also. Okay. अब देखो यहाँ पे Heikenasi ही open है. Okay, price. Okay. अब देखो, let's open first, say 5 minute chart. Okay. Then we'll understand properly. Okay, अब देखो पहले कैंडलस्टिक देखते हैं। ठीक है, अब देखो कैंडलस्टिक्स में क्या प्रॉब्लम है, ये देख रहे हो, ये से यहाँ पे ये नीचे आ रहा है, यहाँ से जब ये ऊपर जाना शुरू हुआ, ठीक है, तो काफी लोगों ने सोचा होगा कि हाँ ये डाउन मूव खत्म हो गया, अब ऊपर जाना शुरू हो रहा है, लेट्स बाय। अब आप इसको अगर उसमें डालते हो, Heikenasi में डालते हो, यार वैसे Heikenasi डिस्कस नहीं करना था, चलो बाद में डिस्कस करेंगे, Heikenasi छोड़ दो, we'll discuss that later. Let's discuss line graph only. Okay, so you can just select line graph here. Okay, let me remove all this. Moving average, stop. Okay. So clearly you can see line graph है बैंक निफ्टी का, clearly you can see कि हाँ this is here, this is the trading range. अगर आपको एक trading range बनाना हो तो आप easily अब बना सकते हैं, हाँ this is the range in which bank nifty is trading. Okay. And once it breaks this, you can decide to buy it. This is a breakout, you can buy it here and you can sell it. Okay, because again it has come in range. Okay, and you can just sell it here. So that's the main use of line graph, to spot the trend. Okay, it's very easy to spot. Any one of you can spot kahin pe bhi
यहाँ देखो इतना ऊपर नीचे है, बट एट द एंड ऑफ द डे यू गाइस कैन क्लियरली सी कि हाँ दिस इज अ ट्रेंड लाइन. इट्स इजियर टू ड्रॉ अ ट्रेंड लाइन ऑन ए दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ ग्राफ, राइट. काफी इजी है कि तुरंत समझ में आ रहा है हाँ ये लाइन है, ये लाइन है, इजियर, राइट. एक एक लाइन है, सिर्फ मिलानी है. ओके यहाँ पे आप देख सकते हो, हाँ ठीक है, ये काइंड ऑफ ये आपका एक रेंज चल रहा है. ओके so the use of line graph is just to spot trend. Okay कि trending है या non trending है market, you can easily find out using line graphs. Then if you see this bar graph कहाँ गया, bars, हाँ अब देखो ये बार ग्राफ है. ठीक है, बार ग्राफ में आपको देख के ही नहीं गंदा गंदा सा लग रहा है, क्योंकि यू कैन नॉट मेक आउट व्हाट इज हैपनिंग हियर, इट्स रियली डिफिकल्ट. बट वन फायदा व्हिच आई हैव ऑब्जर्व्ड ऑफ बार ग्राफ इज इन फाइंडिंग इलियट वेव्स. इलियट वेव निकालने के लिए बार ग्राफ्स बहुत इजी होते हैं, क्योंकि जो लाइंस होती है ना काफी इजीली हमें समझ में आ जाता है कि ये टॉप्स हैं, ये बॉटम्स हैं. इट्स इजियर टू फाइंड आउट वेव्स. एंड so when we'll discuss Elliott wave, then we'll mostly use bar graph only, okay, because it's easier to find Elliott waves in bar graph. But usually on a day-to-day basis, if you just look at each of these candles, it's very difficult to actually make out what is happening, who is buying, who is selling, what is happening. It's a bit difficult, okay. So that's why they did not become very famous, and they are not very famous with the traders, and they mostly not used by people. The good thing was only about in Elliott wave theory, it becomes easier. Like for example, यहाँ पे clearly दिख रहा है कि हाँ ये 1 2 3 है, kind of correction है. फिर अगर again next चला यहाँ पे 1 2 3 4 चल रहा है, तो it's easier to spot Elliott waves, and I use mostly for that. We'll discuss that in intermediate course, okay. Then candles, yes, candles everyone knows, easier to see, understand, okay कि हाँ ठीक है ये क्या है. ये आपका यहाँ पे ओपन हुआ था, यहाँ पे क्लोज हुआ, दिस इज द लो ऑफ दिस पर्टिकुलर टाइम एंड दिस इज द हाई. ओके सो दैट्स इट on these charts. Okay, got it guys? Any questions on any of this? How have we driven the resistance? How have we drawn the resistance? How do we get to know about that? Yep, it's easier, no? Like see, Is this self-generated by the system I trading made me it, only? no? Yeah, you just select here, na, a line. Okay, you can draw it anywhere. Okay, like this, and draw it anywhere. Okay. No sir, no, we want to ask you that कि जो लाइंस आप आ रही हैं ये सेल्फ जनरेटेड आई है, आपने खुद ट्रेंड को मतलब नहीं खुद देख के बनाया है ना मैंने अभी. हाँ वही वो ये देख रहे हो, ये कहीं भी बना सकते हैं, यहाँ कर दिया. ठीक है, आई एम मेकिंग इट हियर बिकॉज दिस इज जॉइनिंग दीस टॉप्स. यहाँ से नीचे आया, ये टॉप यहाँ से नीचे आया, तो ये रेजिस्टेंस हो गया. ये सीपीआर के बारे में पूछ रहा है. इट इज सीपीआर, वो सीपीआर है, वो एक इंडिकेटर अच्छा है. सीपीआर, हाँ दिस सीपीआर इज एन इंडिकेटर. ओके विल डिस्कस दैट. ओके ये भी सीपीआर विल डिस्कस इन इंटरमीडिएट. ओके वी डोंट नीड टू डिस्कस सीपीआर राइट नाउ. Okay, but other indicate things we'll discuss here, like MACD and all those things. One question on the candlestick. I have a question. There is one right now. The candlestick is the color of candlestick is based on the opening price of the current candlestick. Yeah, current price. Okay. Yeah, but there is an option of choosing it based on the closing price of the previous candlestick. So, is there any circumstances that would be useful? I actually don't know about it, sir. Means, can we do that also? I am not sure. Oh, we can do that. We can do that, but let me see. Color based on previous close. Oh, yeah, I never have used it. Okay. What's the use of this? ऐसे 4-5 ऑप्शन आते हैं कि से हाई maybe on the daily basis it is more useful because but I have never used it ever. I've never used it, to be honest. Okay. See guys, I don't know everything. There may be few things you guys must be knowing more than me. Okay, I like things, it's simple, not most of it. See, even indicators I use default settings, don't have to mess with them. Okay. Anyway, one question I have on this, ये chart drawing का कब मतलब which course will cover this, or intermediate or advanced drawing of the chart, like advanced, someone who does not know how to draw a chart? Advanced we'll cover all this. Abhi we are beginner, intermediate, we are just covering only theory. Okay. What is what. Okay. Beginner में basic चीजें, intermediate and bit advanced things, and in advanced what we'll do, we'll actually discuss how to use all of this. Okay, अभी हम हथियार इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है, अभी गोला बारूद इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है, फिर लड़ाई कैसे करनी है we'll discuss that in advanced. Okay,
Bro, I have मेन one मेन question. थिंग है कि कैसे ड्रॉ करते हैं, क्योंकि हमको पता ही नहीं ड्रॉ कैसे करते हैं। नॉर्मली देखते हैं आप ड्रॉ करते हैं, बट वी डोंट नो हाउ टू ड्रॉ द नो चार्ट। इश्यूज, विल टीच दैट इन एडवांस ना। अभी तो बस ये अभी तलवार चलाना सीख रहे हैं, अगली बार पिस्टल बम सीखेंगे, श्योर ठीक है। श्योर, डन डन डन। ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम लेना होगा, क्लियर नहीं दिख रहा है सर। फिर ये क्या वो चार्ट वगैरह ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम लेना पड़ेगा या फ्री जो मिल रहा है उससे हो जाएगा? free is enough, yeah, free is enough. I have taken premium only because I used 2-3 charts in a same, that's why। okay, just that। Bro, I have डाउन सेशन बाद में रखते हैं सर अभी थोड़ा प्लीज। क्लियर नहीं दिख रहा है सर, क्लियर दिख नहीं रहा है सर। क्लियर नहीं दिख रहा है? हाँ We can't see clearly. Please show Renko also. Yeah, Renko is here only, yeah. You can select Renko. See, Renko, if you see, it's very interesting. You see with the time here, 140, okay? And you see the time here, 125, 15-minute So it's difference. blur. It's blurry, यार, अब that's what to do about it। कुछ तरीका है क्या? एकदम क्लियर है। I guess Clear because सर आपकी स्क्रीन छोटी कर दो और इसका बड़ा। इंटरनेट की प्रॉब्लम है ये, इंडिविजुअल I think इंटरनेट की yeah, प्रॉब्लम। you guys That have is to clear. look at your issue है, particular internet। Little bit Yeah, it's it's internet connection issue. correct। Yeah, it's maybe limited to individual people because more. I mean, I'm able to see it clearly. We Most may of be us- now Yeah, stop. We may एकदम be now clear है। stop. We may थोड़ा be zoom stop ज्यादा Sir, कर please दीजिए। mute everyone. yeah, we may stop right now. We may stop. Okay एक guys, बार ठीक है, सर, एक there's बार more। हैक एंड ऐसी दिखा दो सर, एक बार हैक एंड ऐसी दिखा दो। यार यहीं पे है ना, देखो लिखा हुआ है नाम, हाइकनाशी ये है, ठीक है। पर चार्ट दिखा दो लाइन कैसे 8, कैसे दिखता है। ये देखो ये चार्ट है हाइकनाशी का। ओके, हाइकनाशी का भी मेन यूज वही है, ट्रेंड। देखो ये क्लियरली समझ में आ रहा है कि हाँ एक ट्रेंड में नहीं है, ऊपर नीचे सेम। यहाँ पे आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि हाँ ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। अब इसका यूज कैसे करते हैं वो विल डिस्कस इन एडवांस। ओके Bro, I have one question. So, seeing the chart, so I got to know like it is in a downtrend and it is coming to near to support. So, if I am a retail trader, so what I am going to do if it is near the support? So I'm going to buy the stock. No, or you like, are not going to buy then। No, you are wrong। I will cover that na later in intermediate and all, but yeah, that is wrong। You just seeing a support and resistance, you do not take a decision। okay, सर डाउट सेशन बाद में रखते हैं, मैं अभी क्लास yes, ठीक है guys, चलो अब प्रेजेंटेशन पे चलते हैं, ठीक है। Yes, yes, only 30 minutes left. Okay, now let's move। So guys, please mute yourself, okay, later now, okay, please। Okay, so these are the charts that we discussed। okay, now let's talk about mainly candlesticks because that's what we are going to mostly use। okay, and in beginner, let's talk about various candlesticks। okay, and then we'll discuss we'll see some charts to see क्या ये कैंडलस्टिक एक्चुअली काम करते हैं, और करते हैं तो कब करते हैं, ठीक है। तो वो थोड़ा हम देख लेंगे। तो कैंडलस्टिक देखो आपके 3 तरीके के मेनली, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, डबल और मल्टीपल, ठीक है। सिंगल में आपके जो सबसे इंपॉर्टेंट है ये है मार्बूजो। मार्बूजो में क्या होता है कि ओपन और लो सेम होता है, हाई और क्लोज सेम होता है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि प्राइस में इस पूरे टाइम में कभी सेलिंग हुई ही नहीं, हमेशा बायर्स वेयर more stronger than sellers। that's why the price closed on the high, right? क्योंकि अगर sellers strong होते तो जरूर ऊपर एक विक बनता, हाई से नीचे क्लोज होता। ओके, सो जब भी आप ये कैंडल देखते हो ग्रीन, ठीक है, जहाँ पे ओपन इज द लो एंड हाई इज द क्लोज, यू अंडरस्टैंड दैट ओके एट दिस पर्टिकुलर, उस पर्टिकुलर पीरियड में, उस पर्टिकुलर 5 मिनट का कैंडल है तो उस 5 मिनट में, 3 मिनट का कैंडल है तो उस 3 मिनट में buyers strong रहे हैं। that what it means। now obviously if it is an hourly candle it is of more importance because पूरे घंटे बायर strong रहे। अगर weekly candle है तो even more important because पूरे week buyers are stronger। okay, so that's how you give importance, okay, based on the time। okay, then comes this particular candle, ठीक है। अब देखो मेरे को नाम वाम नहीं याद है, अब इसको अम्ब्रेला बोलते हैं कुछ लोग कुछ बोलते हैं, बस इसका मतलब बस क्या है कि प्राइस नीचे आया, ठीक है, यहाँ पे आया, बट देन प्राइस यहाँ पे क्लोज नहीं हुआ। क्लोज कहाँ पे हुआ? हाई पे हुआ, ऊपर, ओपन के भी ऊपर गया प्राइस। एक उस मिनट में, उस 5 मिनट में, 3 मिनट में प्राइस एक बार आया जरूर नीचे, बट सस्टेन नहीं कर पाया। बायर्स made the price go and actually closed it above even the open। okay, so that also means buyers are more stronger, right? then comes this candle। इसमें क्या होता है, ऊपर एक छोटा सा विक है, नीचे एक छोटा सा विक है, बट इस कैंडल का मतलब ये नहीं होता है कि देयर इज नॉन डिसीजन।
ऐसा नहीं होता है, क्योंकि बॉडी जो है बड़ी है, मतलब काफी ट्रेडिंग तो हुई है, अलग अलग प्राइस पॉइंट पे बायर्स और सेलर्स रहे हैं, तो दिस कैंडल इज डजंट मीन देयर इज इनडिसीजन. ओके, दिस इज स्टिल बुलिश जस्ट लाइक Marbujo, because the close is still near the high, though not at the high, but very near the high. Okay, so this also is a very strong bullish candle. This candle shows because there is small body. Okay, so it shows कि हाँ price went high, but then it came back and closed somewhere near the middle. ପକେଇଦେ ସେ ଯୋଉ ଗ୍ରୋସରୀ ସଉଦାରେ ଦିଟା ପଡୁଛି. Yeah. So this candle shows कि price went up, but came and settled somewhere in the middle. Similarly, price went down, but again it came here somewhere. So what does it shows कि एक बार bulls price को ऊपर लेके गए, but bears brought it down, but they were not able to bring it down to here. They were only able to bring it down somewhere here. Similarly, bears took it down, but they were not able to sustain here. Bulls actually pulled it up. Okay, so this shows that there is kind of an equal strength of bulls and bears. Okay, now comes this candle. इस candle में क्या दिखा रहा है? Similarly, price went up. Okay, but यहाँ पे it didn't sustain. Bears were very strong. They brought the price down and it actually closed somewhere near the open only. Okay, so bears did not let the price sustain here. Okay, similarly vice versa. Okay, यहाँ पे उससे वही जो अभी इधर डिस्कस किया उसका उल्टा. Okay, then comes double candlestick pattern. ठीक है, अभी देखो मैं इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देता नहीं हूँ, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ पीपल नोइंग, आई एम जस्ट टेलिंग यू. बुलिश इनगल्फिंग है कि एक छोटा कैंडल है, उसमें एक बड़ा कैंडल बना, बगल में ग्रीन कलर का, बुलिश हो गया. क्यों? क्योंकि यहाँ तक सेलिंग हो रही थी, फिर यहाँ पे बायर्स आ गए और इतनी हैवी बाइंग हुई कि दिस होल कैंडल was bigger than this, and this candle was shadowed by this particular green candle. That's why engulf कर लिया उसको. ठीक है, फिर ये हरामी. हरामी क्या होता है ना, जापानीज में हरामी का मतलब होता है प्रेग्नेंट. ठीक है, सो बुलिश हरामी मतलब क्या हुआ कि यहाँ तक डाउन ट्रेंड चल रहा था. ठीक है, और यहाँ पे आपका वो एक ग्रीन कैंडल बना, तो मतलब कि क्या हुआ कि a bull trend is in the womb of this downtrend, and soon a bull trend can happen, and that's why they call harami pattern. ठीक है, बाकी होमिंग पेजेंट से भी कोई मतलब नहीं, ये भी फालतू पैटर्न होता है, ऐसे इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है. फिर ट्वीजर बॉटम, दीज आर ऑल फालतू थिंग्स. ओके, जस्ट आप याद रख लो, करना है तो करो. आई डोंट इवन रिमेम्बर, इट डजंट इवन मैटर. चाहे नहीं चाहिए, रेड बुल है ना. थैंक्स. ठीक है गाइस, फिर आपका ये ट्रिपल कैंडल स्टिक और ये मल्टीपल कैंडल स्टिक पैटर्न है. वैसे देखो 4 5 6 7 8 बहुत सारे कैंडल स्टिक पैटर्न है, बट उसका कोई मतलब नहीं है. भाई काम करते हैं ये सब देखने की जगह, अब क्या करते हैं, चार्ट्स देखते हैं और सीधे समझते हैं कि इन कैंडल स्टिक्स का यूज क्या है. ओके, बेटर. सो गाइस चलो चार्ट पे चलते हैं. ओके, एंड लेट्स सी डिफरेंट चार्ट्स. एंड so guys, you can see my chart. Yes. Yes, sir. थोड़ा जूम कर लीजिए ना. Yes, sir. सब हम क्या करेंगे ना गाइस, हम बार रिप्ले करेंगे. ठीक है, एंड वी विल सी. I'll ask you question, you guys have to answer, and हम देखते हैं कि कैंडल स्टिक्स क्या काम करते हैं नहीं करते हैं. थोड़ा पीछे चलते हैं जिंदगी में. जैसे 8 तारीख का खोल लो ऐसे. ठीक है, दिस इज जस्ट ऐसे ही मैं खोल रहा हूँ. ओके, एंड देन आई विल आस्क यू कि अभी यहाँ पे क्या होने वाला है क्या नहीं, एंड यू गाइस हैव टू टेल मी. ओके, सर एक लड़का बाहर हो गया है डिस्कनेक्ट, उसे वॉइस नहीं आ रही थी जब आपने उसे अनम्यूट किया था. ये गौरव क्या बार बार बाहर ही होता रहता है. सर जियो यूज कर रहा है क्या ये वो? उसे आवाज नहीं आ रही थी तो वो दोबारा चला गया. पीपीटी में 3 करो एयरटेल लगाओ भाई. सर पीपीटी में वो 3 कैंडल मिस हो गए. वो वोडाफोन यूज कर रहा था. तो गाइस हम क्या करेंगे, अब प्ले करेंगे जस्ट लाइक जैसे मार्केट में होता है. आई स्टॉप समवेयर एंड आई आस्क यू गाइस कि इस कैंडल स्टिक के बाद क्या हो सकता है, और अगर काम करता है कैंडल स्टिक तो क्यों कर रहा है,
काम नहीं कर रहा है कैंडलस्टिक तो क्यों नहीं करा, दोनों हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। Can we use chat instead of unmuting everyone? That is a lot of noise. I cannot hear you, bro. I think when you're asking something, let's use the chat instead of unmuting everyone and speaking. So that is taking a lot of noise. There are a lot of people Here I trying to want say the people to same thing. unmute themselves because this has to be interactive. I want to ask people questions and to understand if they're understanding or not. So guys, see this candle has formed. Okay, what does this candle show? This candle show कि market open हुआ यहाँ पे. Okay, प्राइस नीचे तक बेयर्स लेके गए और नीचे गया, बट यहाँ पे बुल्स ने बाइंग करी, राइट, और प्राइस ऊपर आया और यहाँ पे क्लोज हुआ। अब नेक्स्ट क्या हो सकता है एंड क्यों हो सकता है, सोचो नेक्स्ट क्या होना चाहिए कैंडलस्टिक पैटर्न्स के हिसाब से। थोड़ी बाइंग्स आनी चाहिए, बाइंग आएगी थोड़ी, बुल्स प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, एक छोटा ग्रीन कैंडल आ सकता है शायद। तो देखो अब नेक्स्ट देखते हैं क्या हुआ, फिर सोचेंगे क्यों हुआ और क्यों ऐसा हुआ, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट तो ये कैंडल बन गई जो कि पूरी बुलिश है, तो इतने बड़े बेरिश कैंडल के बाद ये बना बुलिश, क्यों बना, एनी आइडिया? स्ट्रॉन्ग सेल हुआ है ना शायद, maybe there is a short selling position, retracement और so profit they are can be a covering their profit position booking. by buying the stock. ठीक है चलो मैं बताता हूँ। स्ट्रॉन्ग सेलिंग के बाद कैंडल ओपन प्राइस ऊपर हो गई, नहीं सपोर्ट जोन पे स्टॉप लॉस था, ओके लेट मी डिनो, सपोर्ट जोन पे स्टॉप लॉस था बुल ओके 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 गाइस, ठीक है अब सुन भी लो भाई, डिमांड केम हो गया, ठीक है प्रीवियस ट्रेंड इज बुलिश। गाइस अरे रुक जाओ ओके लेट मी आल्सो टेल ना, हो गया ना, बस इंटरैक्टिव रखना है, एक ही बात पे थोड़े ना फोकस करते रहना है। अब देखो इसी वजह से मुझे कैंडल स्टिक्स रटने का मन नहीं करता, क्योंकि अगर सिर्फ आप कैंडल स्टिक पढ़ के जाओगे तो आप बोलोगे कि भाई कैंडल स्टिक की थ्योरी के हिसाब से ये बहुत ज्यादा सेलिंग हुई है, नीचे ही आना चाहिए, ओके, बट what candlestick misses is the point of price। अब जहां पे कैंडल बनते, देखो कैंडल कैसा बनता है इससे मतलब नहीं है, कौन सा कैंडल बन रहा है बुलिश बेरिश उससे मतलब नहीं है, वो कैंडल कहाँ बन रहा है, कहाँ ओपन क्लोज हो रहा है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। अब देखो इसमें हुआ क्या, क्यों ये ग्रीन कैंडल बना, उसका रीजन बता रहा हूँ क्यों हुआ। क्योंकि ये देखो ये प्राइस जहाँ इसने लो टच किया, ये लो क्या था, अब देखो ये कल भी इसने यहीं पे लो टच किया था, ठीक है, और यहाँ से वो ऊपर गया था, मतलब ये जो एरिया था, ये आपका जो एरिया बना, ये एरिया क्या था, ये एक डिमांड जोन था कल, ठीक है, एक दिन पहले। देखो हमने क्या पढ़ा था टेक्निकल एनालिसिस में, कि टेक्निकल एनालिसिस पास्ट एक्शन देख के फ्यूचर दिखा दिया। अब लोग क्या करते हैं ना, हमेशा वही भूल जाते हैं, हमेशा जब भी कंफ्यूजन है, यू शुड ऑलवेज लुक एट द पास्ट, व्हाट हैपेंड। अब इन पास्ट व्हाट यू हैव सीन कि दिस एरिया इज एक्टेड एज अ डिमांड जोन जस्ट एक दिन पहले, एंड आज भी प्राइस यहीं से आया, तो दो ये बेरिश कैंडल है, बट जब वापस इसने यहां से रिजेक्शन दिया तो हायर चांस दैट नेक्स्ट कैंडल आपका ग्रीन ही बनेगा, ठीक है। जब तक ये ब्रेक होकर नीचे नहीं आता यू विल नॉट सेल, दो ये कैंडलस्टिक थ्योरी के हिसाब से यू शुड सेल, बट नो, बिकॉज यू हैव सीन एक दिन पहले यहां से प्राइस ऊपर गया है गिरने के बाद, प्लस ये एरिया भी देखो, ये जो एरिया है आपका, ये कौन सा एरिया है, यहाँ पे पहले रेजिस्टेंस था और जैसे ही ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ अच्छा खासा आपको एक मूव दिखा, नीचे आया गिरा, फिर इसी सेम रीजन में कंसोलिडेशन हुआ, ओके। सो इट्स नॉट इम्पोर्टेंट व्हाट कैंडलस्टिक पैटर्न इज फॉर्मिंग, ओके, यू टेक वो कैंडलस्टिक पैटर्न्स ओनली विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, मतलब कि ज्यादा इंपॉर्टेंस मत दो, उसको रखो दिमाग में, बट इट इज ऑलवेज मोर इम्पोर्टेंट टू सी वो कैंडलस्टिक पर्टिकुलर फॉर्म कहाँ हो रही है, किस सिचुएशन में फॉर्म हो रही है। यहाँ पे देखो एक और चीज इंपॉर्टेंट है, क्या ये ट्रेंडिंग मार्केट है, नहीं, ये यहाँ से यहाँ पे आप देख लो तो ये ऊपर नीचे काइंड ऑफ एक साइडवेज मूवमेंट हो रहा है, राइट। तो अगर एक साइडवेज मूवमेंट हो रहा है तो जब तक साइडवेज मूवमेंट में हमेशा आप बॉटम पे बाई करते हो, सेल नहीं करते हो, ठीक है। सो दैट्स ऑल्सो वन ऑफ द रीजन यू विल नेवर सेल हियर, यू विल ऑलवेज लुक टू बाई। अब देखते हैं आगे होता क्या है। अब देखो वापस ये कैंडल देखो सेम, यहाँ पे ये जो जोन था यहाँ पे इसने वापस यहाँ पे इसको बाइंग मिली, क्यों, क्योंकि आप देख रहे हो ये पहले बना कर रखा है डिमांड जोन है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बार बार जब इसको निकला इसके ऊपर तो बहुत ऊपर गया, जब गिरा
तो यहाँ से वापस सप्लाई डिमांड मिला, और इसीलिए अब देखो अगर यहाँ पे डिमांड नहीं होती तो जब ये डाउन ट्रेंड शुरू हुआ था तो गिर जाता ना। अगर ये यहाँ पे रुका उसका रीजन यही था ना कि देयर वर बायर्स प्रेजेंट इन दिस रीजन वांटेड टू बाय एंड दे ओनली सपोर्टेड, दैट्स व्हाई इट डिड नॉट फेल। नहीं तो ये तो इतने बड़े रेड कैंडल के बाद गिर जाना चाहिए था। ठीक है, देखो इसीलिए फिर यहाँ पे आपको इस कैंडल में फिर आपको डाउन ट्रेंड नहीं मिला, देखो वापस ये ऊपर क्लोज हुई। अब यहाँ पे वापस क्लोज क्यों हुई? क्योंकि इन लोगों ने जो यहाँ पे सेल किया था, ये वांट these people who have shorted here, they want the price to fall. Okay, but now there are buyers also. Okay, ये ग्रीन कैंडल देख के कुछ और बायर्स आगे क्या नहीं हो सकता है कि अब ऊपर जाए, एंड दे आर नाउ श्योर कि हाँ। तो अब यहाँ पे देखो बुल्स और बियर्स की लड़ाई हुई, नो नन ऑफ देम वर सक्सेसफुल। तो हमें एक ऐसी कैंडल देखने को मिली। ठीक है, अब देखते हैं और आगे क्या हुआ। अब देखो यहाँ पे देख रहे हो, अब यहाँ बुल्स जो है लड़ाई जीत गए। ठीक है, यहाँ पे वो पूरे लड़ाई जीत गए। अब देखो यहाँ पे इस कैंडल पे आप लॉन्ग जाने का सोच सकते हो, क्यों? कई रीजन। एक तो कैंडल स्टिक थ्योरी के हिसाब से भी दिस इज वेरी बुलिश कैंडल फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली ये बुलिशनेस आई कहाँ से? एक पर्टिकुलर डिमांड जोन से आई है। ठीक है। थर्डली एक रेंज में है, रेंज का लो ये है, रेंज का हाई ये है, ये जो डॉटेड ऊपर लाल लाइन है। तो यहाँ पे अगर आप खरीदो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो यहाँ तक जाएगा। ठीक है, सो नाउ ऑन दिस कैंडल यू कैन गो लॉन्ग, बट सिर्फ कैंडल स्टिक देखने की वजह से हमने नहीं डिसाइड किया। हमने ये देखा कि कैंडल बनी कहाँ है, ये कैंडल इस चार्ट में कहाँ बनी है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट। डजंट मैटर कि वो कैंडल दिख कैसी रही है। ठीक है, सो ऑलवेज ट्राई टू लुक एट कैंडल्स बेस्ड ऑन वेयर दे आर फॉर्मिंग, ओके, नॉट हाउ दे आर फॉर्मिंग। ओके, अब देखो आगे क्या होता है, देखते हैं। अब देखो एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो मार्केट जब खुला यहाँ पे बहुत सारी शॉर्टिंग है, तभी ये रैपिडली शॉर्टिंग हुई, ये बना। अब जिन लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट किया रहेगा उनका स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा? एनी आइडिया? वो उसके कहते हैं 2% सर उस नीचे होना कैंडल के चाहिए ना। सबसे नीचे बॉटम पे सपोर्ट जोन पे। जिन लोगों ने शॉर्ट किया होगा उनकी बात कर रहा हूँ भाई। शॉर्ट करोगे तो हाई स्टॉप पे लॉस रहेगा, ऊपर हाई रखोगे पे ना। ऊपर होगा। हाँ उसका हाई रहेगा, रेड लाइन पे हम्म, थोड़ा ऊपर। एग्जैक्टली। अब देखो यहाँ पे दो तरीके के लोग होंगे। प्रीवियस डेज है। हाँ देखो दो तरीके के लोग हैं। एक तो होंगे हमारे आपके जैसे, ठीक है, जिनकी थोड़े समय फट जाती है। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, बहुत छोटा स्टॉप रख रहे हैं, तो वो ऐसे लोग क्या करते हैं, राउंड नंबर पे स्टॉप रखते हैं। जैसे नहीं आप लोग बोलते हो कि अब ये 30,020 पे रख लेंगे स्टॉप। ठीक है, वो यहाँ तक वेट नहीं करेंगे क्योंकि उनका उतना कैपेसिटी नहीं है, उनकी फट लेगी। तो यार 30-20 पे रखेंगे या 30-50 पे रखेंगे। तो मेंटालिटी समझो, ट्रेडिंग करते समय समझो कि अगला सर आपकी आवाज नहीं आ रही, गाने जरूर बज रहे हैं। चलो ठीक है, अब यही है, मतलब इंडिया में बदतमीजों की कमी नहीं है। एनीवे ठीक है गाइस, तो अब जो यहाँ पे लोग होंगे, यहाँ पे दो तरीके, एक तो होंगे डीप पॉकेट वाले बड़े लोग। ठीक है, वो लोग कहाँ पे शॉर्ट रखेंगे, वो थोड़ा ऊपर रखेंगे, वो ये जो आपका प्रीवियस डे हाई है इसके भी थोड़ा ऊपर रखेंगे। ठीक है, दे विल कीप समवेयर हियर, उनका स्टॉप यहाँ पे कहीं होगा। फिर हमारे आपके जैसे कुछ गरीब लोग होंगे जो जिनकी छोटे में फट जाती है, तो वो क्या करेंगे, वो कुछ लोग तो क्या होंगे, कितना बड़ा आने के बाद स्टॉप अपना कॉस्ट पे कर लिया होगा, तो वो लोग ऑलरेडी यहाँ पे होंगे कि हाँ अब मुझे लॉस नहीं लेना है, जितना अगर नीचे जाना है जाएगा, नहीं तो यहीं से रिवर्स हो। तो दोज पीपल विल कीप हियर। देन देयर विल बी फ्यू पीपल हु विल बी कीपिंग स्टॉप समवेयर ऑन दिस राउंड नंबर्स, ओके, 30,020 एंड ऑल के आसपास। ठीक है, तो अब देखो, अब अगर आपका यहाँ से एक कैंडल बनती है सिर्फ इन दोनों के ऊपर, तो यहाँ पे हमारे आपके तरीके गरीब टाइप के लोग हैं, मतलब कि वॉल्यूम कम आएगा। तो अगर इसके ऊपर अगर जाता है तो यू डोंट एक्सपेक्ट कि बहुत बड़ा मूवमेंट आने वाला है। ठीक है, क्योंकि हम आप जैसे लोगों का कितनी ही क्वांटिटी होगी, तो हो सकता है इसके बाद ऊपर जाए फिर वापस यहाँ से नीचे आ जाए। ठीक है, क्योंकि रेंज में है और वो वापस नीचे आ जाए। सो यहाँ पे अगर जस्ट ये ऊपर ब्रेक किया तो इसका मतलब ये नहीं यू विल बाई, बिकॉज ओनली वेरी गरीब पीपल विल बी कीपिंग स्टॉप्स हियर, उनके स्टॉप सेट होने से कोई मोमेंटम नहीं आने वाला है। बट इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पे प्रोफेशनल ट्रेडर्स, बड़े बड़े ट्रेडर्स जो हैं, उनका स्टॉप्स यहाँ कहीं होगा। अगर इसके ऊपर जाता है देन यू विल सी ए वेरी रैपिड मूव। ठीक है, सो अब नाउ लेट्स सी होता क्या है।
अब देखो क्या हुआ, ये प्राइस गया यहाँ पे, ठीक है, सस्टेन नहीं हुआ, बेयर्स ने दबा दिया, वापस यहाँ आ गया। तो अब हमें क्या समझ में आ रहा है कि यार यहाँ पे तो बहुत तगड़ा सप्लाई जोन है। शुरू हुआ तो यहाँ पे लोगों ने सेलिंग करी, प्राइस वापस यहाँ गया, फिर से लोगों ने सेल कर दिया, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक जोन बना लेंगे। अब हमें समझ में आ रहा है कि हाँ भाई दिस, ये तो बहुत तगड़ा सप्लाई जोन है, पीपल आर नॉट लेटिंग प्राइस गो अप, ओके, मतलब इसके ऊपर बहुत सारे स्टॉप्स होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दो ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। एक तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते हो, अगर आपको दिख रहा है कि हाँ ये मेरा स्टॉप लॉस है अब, ठीक है। अब देखो स्टॉप लॉस यहाँ से हो गया 256 से 367, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, मतलब पर लॉट 2500 का लॉस। आपका टारगेट क्या होगा, अब यहाँ पे आप सेल करोगे तो फिर अगर रेंज बाउंड है, ये देखो रेंज बाउंड ही तो हुआ ना, नीचे आया, ठीक है, ये एक मिनट, देखो अब ये रेंज बाउंड ही तो दिख रहा है ना, यहाँ से नीचे आया, फिर वापस ऊपर गया, फिर यहाँ नीचे आया, फिर ऊपर गया। तो एट मैक्स आप एक्सपेक्टेशन क्या कर, रियलिस्टिक अगर एक्सपेक्टेशन रखो तो ये रखोगे ना कि यहाँ तक आएगा फिर, ठीक है, क्योंकि फिर यहाँ पे सब डिमांड जोन है, तो यहाँ से फिर आके वापस जा सकता है, ठीक है। तो कहने का मतलब कि अगर हम यहाँ पे शॉर्ट करते हैं, ठीक है, अगर हम यहाँ पे शॉर्ट करते हैं, इफ वी टेक अ शॉर्ट पोजीशन ओवर हियर, दिस विल बी आवर रिस्क, ओके, बिकॉज विल हियर आर द मेजर स्टॉप लॉसेस। तो हम अपना लॉजिकल अगर स्टॉप लॉस देखें तो यहाँ पर रखें, क्योंकि यहाँ पे बड़े इन्वेस्टर्स का भी स्टॉप लॉस है, और दिस विल बी आवर रिवॉर्ड, ओके। तो अगर हम देखो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से तो ऑलमोस्ट 1:1, इनफैक्ट 1:1 से कम है, तो विल यू शॉर्ट? नो, यू विल नॉट, बिकॉज योर रिस्क रिवॉर्ड इज नॉट गुड। 100 पॉइंट के रिस्क के लिए आपको 80-90 पॉइंट मिल रहा है, तो दो प्राइस नीचे आएगी, बट यहाँ रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं। सो एनीवे ये सब चीजें मैं एडवांस में बात करने वाला था, बट मैंने एक तरह से आपको अभी समझा दिया, फ्लेवर दे दिया क्या होने वाला है, ठीक है। So here you will not enter the trade. Okay, that's the message that I want to give you. Okay, अब let's see आगे क्या होता है। अब देखो गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल बन गई। अब देख रहे हो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल बन गई। अब ये जो कैंडल बनी यहाँ पे, जितने भी हमारे आपके जैसे कम पैसे वाले गरीब टाइप के लोग हैं, उनकी पूरी फट लेगी। Now these people will start taking out their short position, they will start buying। सेल किया है तो बाई करेंगे, राइट? या तो उनके स्टॉप लॉस हिट होंगे या उनकी फट ली, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं, पहले स्टॉप लॉस रखते हैं लेकिन बाद में उनकी फट लेती, इतना बड़ा कैंडल देख के। तो यहाँ पे आप नेक्स्ट कैंडल में एक्सपेक्ट कर सकते हो बहुत बड़ा एक और ग्रीन कैंडल आ जाए, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है। अब देखो नेक्स्ट में क्या हुआ, प्राइस ऊपर गया लेकिन नीचे गया, क्यों? क्योंकि जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनका ये स्टॉप है, दे डोंट वांट देयर स्टॉप्स टू गेट हिट। So though price entered here and it took out the stops of many small people, अभी बड़े इन्वेस्टर्स बचे हुए हैं, they don't want their stops to it, उन्होंने फिर से प्राइस को गिरा दिया, ठीक है। That's how you read candles। Let's see next क्या होता है। देखो नाउ दिस इज, ये जो कैंडल बना था ना, तब यहाँ पे आपको एक सबसे अच्छा शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे था, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा था ना कि काफी जो चूतिया टाइप के हमारे आपके टाइप के इन्वेस्टर है, उनका वैसे भी स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, वो ऑलरेडी निकल गए मार्केट से। और तब अगर ये जो सेलिंग आई है ऑब्वियसली बड़े लोगों ने की है, ठीक है। और यहाँ पे जब आप शॉर्ट करते हैं तो आप देखो आपका अब यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड देखते हैं क्या बन रहा है, ठीक है। फिर हमेशा आप रिस्क रिवॉर्ड देखो शॉर्ट पोजीशन। अब देखो यहाँ पे अगर हम शॉर्ट लेते तो ये हमारा स्टॉप लॉस हुआ, ये हमारा टारगेट हुआ। अब देखो अब हमारा स्टॉप लॉस और टारगेट अच्छा लग रहा है, 1:1.7 1.5 का risk reward. So this is one trade which you can think I'll still not take trade because I take trade only when it is 1:2 or more, ठीक है। But few people might like more than 1:1 का risk reward, they can take a trade over here, okay। Now you can see the price where it is going, it has to go at least here, ठीक है। देखते हैं कहाँ तक जाता है। Now also guys, one thing more important, आपको पता है ये रेंज बाउंड मार्केट में मूवमेंट फास्ट नहीं होता है, बहुत स्लो मूवमेंट होता है, इसीलिए ऐसे मार्केट में आप ऑप्शंस खरीदते नहीं हो, फ्यूचर्स में ट्रेड करते हो।
अब देखो ये आ गया ना यहाँ तक, अपने ऑलमोस्ट हमारे टारगेट के आसपास तक। अब ये सीपीआर के यहाँ पे आपका सपोर्ट है, यहाँ पे निकाल लो। ठीक है, हो गया, आपके पैसे बन गए, प्रॉफिट आ गया। ठीक है, डन। ठीक है, सो गाइस अभी आपको समझ में आया कैसे कैंडलस्टिक्स देखते हैं? यस सर। ठीक है, यस सर, यस सर। so you guys understood ना कि देखो it doesn't matter if it is ये मारबू जो बन रहा है कौन सा, मतलब ये सब रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो सब जो दुनियादार में लोग कोर्स बेचते हैं ना, उनका काम होता है ये सब एकदम रटने की जरूरत नहीं है। आप बस कैंडलस्टिक देखो, पहले एक समझो कैंडलस्टिक में हुआ क्या। ठीक है, ये कैंडल में क्या हुआ, अच्छा प्राइस ऊपर गया, इसको ऊपर ले जाया गया, लेकिन कहाँ पे ले जाया गया? ठीक है, किस पोजीशन पे बना, एनालाइज दैट। मार्केट कैसा चल रहा है, ट्रेंडिंग है, साइडवेज है, एंड देन बेस्ड ऑन ऑल दैट डेटा यू एक्चुअली डिसाइड। सो अ कैंडलस्टिक इन इटसेल्फ, अगर एक नॉर्मल कैंडलस्टिक आप सिर्फ एक कैंडलस्टिक देखते हो, उसका कोई मीनिंग नहीं होता है। ठीक है, एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग देयर इज नो मीनिंग। इट इज गुड फॉर बुक्स, इट इज गुड फॉर टीचिंग पीपल, but in terms of trading, just one single candlestick pattern if I show you, or two or three, doesn't make any difference in your life. It should not, if someone asks you candlestick दिखा कि क्या है, आप बोलो कुछ नहीं है, ये चुतियापा है। ठीक है, unless and until you know where that candle is forming in the whole price, पूरा सिनेरियो क्या है, जब तक आपको पूरा सिनेरियो नहीं पता है, कैंडलस्टिक का कोई मैटर नहीं, ना मतलब नहीं है, ना उसके पैटर्न का। Okay, so that's how you read candles. Got it, guys? तो जो एसएल लगाते हैं वो यस तो सर। क्लियर हो गया, लेकिन टारगेट के लिए जो आप रेशो बता रहे हैं 1:2 या 1:3, तो जो टारगेट पॉइंट है जैसे वो प्रॉपर थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पाया कि 1:2। ये टारगेट भी तो डिफाइंड नहीं है ना। अब ये साइडवेज मार्केट है, ये अगर साइडवेज मार्केट है, ठीक है, आपको पता है ये यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे गया, राइट, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे गया, तो अब नेक्स्ट कहाँ जाएगा? यहीं आएगा ना। दैट इज द मोस्ट लॉजिकल थिंग। नीचे भी जा सकता है, लेकिन अगर आपको मिनिमम मोस्ट सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी अगर कहाँ तक जा सकता है आप देखोगे, तो यहाँ तक तो आ ही सकता है मिनिमम, है ना। तो आपका ये टारगेट हो गया। तो इस टारगेट के बेस पे 1:2 या 1:3। हाँ, अब आपको पता है ये टारगेट है, एग्जैक्टली। अब आपको ये पता है ये टारगेट है आपका। तो अब जैसे ये है, यहाँ पे भी तो लाल कैंडल बनी, ट्रेंड में भी है, लेकिन अब आप यहाँ पे थोड़ा ना सेल करोगे, क्योंकि आपका टारगेट इतना है, लेकिन आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे है, राइट। तो आप यहाँ पे नहीं सेल करोगे। ठीक है, गॉट इट गाइस? सर मेरा एक क्वेश्चन था, सप्लाई जोन क्या होता है और सप्लाई जोन कहाँ पे होता है? सप्लाई मतलब क्या हुआ? सप्लाई मतलब ये हुआ कि देयर इज अ लॉट ऑफ शेयर्स वेटिंग टू बी सप्लाइड, लाइक बहुत सारे शेयर्स पर। सप्लाई मतलब दे रहे हैं, मतलब बेच रहे हैं, लाइक कोई किसी को दिया जा रहा है। डिमांड मतलब क्या हुआ? पीपल आर बाइंग, देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल। सो डिमांड जोन का मतलब जहाँ पे खूब सारे बायर्स हैं, सप्लाई जोन का मतलब जहाँ खूब सारे सेलर्स हैं, दैट्स इट। नीचे बेचे लोग ऊपर, नीचे बाई करे लोग ऊपर बेचते ना सर। ठीक है, समझा गाइस? नेक्स्ट बढ़ते हैं यार आगे। आशुतोष, ये 5 मिनट्स का यूज करना चाहिए क्या? No, not an issue. You don't. I have actually scheduled it for 3 hours. I knew that people will go about, so I have actually scheduled it for 3 hours. सर ये जो ये सर टाइम सप्लाई फ्रेम जोन है, कैसे सिलेक्ट करते हैं? या टाइम फ्रेम एंड ऑल वो सब इंटरमीडिएट में देखेंगे। अभी देखो बेसिक में हम बेसिक चीजें समझते हैं। ओके सर, सिर्फ प्रीवियस डे के रेजिस्टेंस सपोर्ट पे अगले दिन का प्रेडिक्ट करेंगे या फिर पिछले दिन में? ये एक एग्जांपल था, ओके, जिसमें प्रीवियस डे वाला काम किया। अब अगर आगे देखो तो हर दिन अलग होता है ना। मैं तुम्हें एक सोचने का तरीका समझा रहा था आपको, हाउ यू हैव टू थिंक। द ओनली मैसेज आई वांटेड टू गिव यू गाइस हियर वाज कैंडलस्टिक देख के यू डोंट डिसाइड वेदर यू हैव टू बाय और सेल। ओके, कि मॉर्निंग स्टार बन गया देन यू हैव टू बाय, इवनिंग स्टार बन गया तो यू हैव टू सेल। नो, नॉट लाइक दैट। यू मेक दैट डिसीजन बेस्ड ऑन वेयर दैट कैंडलस्टिक इज फॉर्मिंग। ओके, अब देखो, अब जैसे ये इसने यहाँ पे ब्रेक कर दिया, ठीक है, यहाँ पे इसने ब्रेक कर दिया, बट नीचे आपको जैसे ये सुबह यहाँ से ही आपको मिला था बाइंग, तो आपको पता है कि यहाँ पे भी सब डिमांड जोन है, तो विल यू सेल हियर? नो, यू विल नॉट, बिकॉज यू नो देयर, देखो ये कैंडल बनी ऊपर, राइट, बिकॉज देयर वाज अ डिमांड जोन हियर। ओके, सो आपको ये देखना है कि कैंडल, अब ये तो कैंडल एकदम ही बेरिश है, क्यों नहीं यहाँ से नीचे गया? कैंडल स्टिक तेरे के हिसाब से तो एकदम नीचे चला जाना चाहिए था,
but that's not important. It's important where the candle is forming. Okay, then only you will be able to trade. चलो guys, ये बंद करते हैं अभी. हम मतलब ये कहना चाह रहे हो कि every theory will not work at every time, मतलब यही कहना चाह रहे हो. Yeah, मतलब मैं ये कह रहा हूँ सर, आप ये कहना चाह रहे हो कि हर थ्योरी एक टाइम पे काम नहीं करती, डिफरेंट यूज करनी पड़ेगी. नहीं, हर थ्योरी एक टाइम पे काम नहीं करती, हर थ्योरी अकेले काम नहीं करती. ठीक है, आपको कंटेक्स्ट देखना पड़ता है. ठीक है, किस कंटेक्स्ट में. फॉर एग्जांपल, एक इंसान ने एक दूसरे इंसान का मर्डर कर दिया, क्या वो इलीगल है? बताओ आंसर इसका. किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, इज इट इलीगल और लीगल? मर्डर करने वाला सोल्जर भी तो हो सकता है ना. एग्जैक्टली, तो डिपेंड करता है ना कंटेक्स्ट क्या है, राइट? आपने सेल्फ डिफेंस में किसी का मर्डर कर दिया, दैट इज नॉट इलीगल, राइट? सो थ्योरी इज सेम, यू आल्सो हैव टू ऑब्जर्व द कंटेक्स्ट. ठीक है, सेना के में मतलब जब वॉर होता है तो सोल्जर वॉर में वही तो करते हैं ना. करते रहते हैं, बट दैट इज नॉट इलीगल. सो एवरीथिंग यू हैव टू सी इन द कंटेक्स्ट. कैंडलस्टिक थ्योरी गलत नहीं बोल रहा हूं मैं, आप सिर्फ उसको अकेले यूज करेंगे. इफ यू जस्ट लुक एट इट इन साइलो, ओके, साइलो यार, साइलो का मतलब अकेले देखोगे तो इट मींस देन इट डजंट वर्क. ओके, यू ऑलवेज हैव टू लुक इट इन द कंटेक्स्ट ऑफ द प्रायर प्राइस एक्शन. पहले क्या हुआ है उसके बेसिस पे यू डिसाइड. गॉट इट गाइस? सर जब प्राइस हाई जाता है तब हम सेल करते हैं ना. प्राइस हाई जाता है तो सेल करते हैं, प्राइस लो जाता है बाई करते हैं. ऐसा नहीं है, प्राइस हाई के बाद और भी तो हाई जा सकता है ना. सो यू हैव टू फर्स्ट डिसाइड हाउ हाई इट कैन गो. इफ यू थिंक हाँ कि जितना अभी हाई बन गया है हाँ उसके ऊपर नहीं जा सकता, या सेल इट. ओके, डिसीजन कैसे, हाउ डू वी टेक द डिसीजन कि इतना हाई जाएगा या फिर इतना लो बाय जाएगा? लुकिंग एट द सप्लाई डिमांड जोन. Okay, here we made ना सप्लाई और डिमांड जोन. बेस्ड ऑन दैट वी डिसाइड कि हाँ इसके ऊपर नहीं जा सकते, यहाँ पे स्टॉप्स होगा. हाँ, अब अगर वो स्टॉप्स पे हिट हो जाते तो वी वुड हैव बॉट कि हाँ भाई यहाँ पे सबके स्टॉप्स हिट हो गए, मतलब बायर्स आर दैट स्ट्रांग. सर एक बार आप दोबारा सप्लाई जोन और डिमांड जोन का. गाइस, सप्लाई डिमांड जोन विल डिस्कस इन इंटरमीडिएट. ठीक है, अभी बस मैंने आपको बता दिया, अब नेक्स्ट करते हैं. ठीक है, Just one question, sorry. What is the CPR? CPR is central pivot range, that also we discuss ma'am in intermediate. Okay, ठीक है गाइस. तो ये कैंडलस्टिक थ्योरी आपको एक समझ में आ गई क्या है क्या नहीं होता है. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. सर कैंडलस्टिक पैटर्न में सर वो तीन कैंडल नहीं तो वो बोला तो यार, उसको रटने की जरूरत, अभी भी तुम्हें रटना ही है इतना समझाने के बाद. उसका कोई मतलब नहीं है. कैंडल तुम्हें सिर्फ इतना जानना है कि बुलिश क्या होता है, बेरिश क्या होता है और कब बन रहा है, कहाँ बन रहा है. दैट्स इट. ओके, 3-4 वो रट के क्या करोगे? वो चार्ट में देखोगे, जाके खरीद लोगे, उससे डिपेंड ही नहीं करता है. वो तो डिपेंड करता है ना कि मार्केट में कहाँ पे अकर हो रहा है, कैसा बना, व्हाट वाज द प्राइस एक्शन, दैट वाज द मैसेज. इफ यू स्टिल डिड नॉट गेट इट देन माय टाइम इज वेस्टेड. देन you don't have to mug it up, you don't have to like ratify it कि हाँ ये कैंडलस्टिक में ये करना होता है. नहीं, Sir, please move further. yeah, ये कब बन रहा है, कहाँ बन रहा है, मींस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये सब देख के वी नीड टू डिसाइड. exactly support, resistance, prior price action, Right. is it a trending market or a range bound market. Okay, so based on every type of, and those things we'll discuss in detail in advance. Okay, but the message I wanted to give it to you guys that you don't need to ratify candlestick patterns. It doesn't matter, they do not work. इंट्राडे में जब भी अपन ट्रेड करते हैं तो सिर्फ चार्ट देख के ही ट्रेड करना ठीक है, या और भी आप कोई थ्योरी यूज करते हैं? हाँ, चार्ट देख के यार, दैट्स ऑल. प्राइस इज एट द एंड ऑफ द डे. जो आपको मार्केट में प्राइस दिख रहा है, दैट्स द ओनली मैसेज यू नीड टू हैव, नथिंग एल्स. ठीक है, इंटरडे में 30 मिनट का चार्ट यूज कर सकते हैं. देखो 30 मिनट का, फिर आपका स्टॉप लॉस बड़ा होगा. ठीक है, फिर 30 मिनट का देखो तो जरूरी नहीं कि आपका टारगेट सेम डे आ पाए ना. प्लीज कंटिन्यू सेशन. ठीक है, लेट्स कंटिन्यू यार गाइस. ठीक है, अब चलो देखते हैं और क्या होता है. तो चार्ट्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया. अब देखो और दो चीजें होती हैं आपका, जो इंडिकेटर्स होते हैं, मूविंग एवरेज होते हैं. ठीक है, अब मूविंग एवरेज में आपके 200 डे, 50 मूविंग एवरेज, 15 अलग अलग मूविंग एवरेजेस. उनका देखो, अगेन आई डू नॉट गिव सो मच इंपॉर्टेंस टू देम. उनका क्या यूज होता है, आई जस्ट टेल यू दैट. ओके, जो बेसिक आपको यूज करना चाहिए मूविंग एवरेजेस का, दैट ओनली विल डिस्कस. बाकी I don't like moving averages because I do not see any difference between, like people say 200 day moving average is important. I say कि ठीक है 200 day is important, why not 190 day?
What is the difference between 200 moving day So then average? what is 44 moving average? Yeah, you can make 44 moving average. See, this is यहाँ पे 9 की जगह मैं 44 डाल दूं, 44 डे का मूविंग एवरेज बन जाएगा। ये 44 डे का चलो बना के ही देख लेते हैं, एक 50 डे मूविंग एवरेज बना लेते हैं, ठीक है। ये चलो ये 50 डे हो गया। ओके, अब बताओ ये 44 और 50 दोनों अगल बगल, अब क्या तुम डिसीजन मेकिंग, मतलब क्या डिफरेंस है दोनों में? कुछ डिफरेंस है? हाउ विल यू डिसाइड खरीदना है कि बेचना है? नहीं कर सकते हो, इट्स लाइक यूजलेस। द ओनली यूज ए मूविंग एवरेज हैज, ओके, आई विल जस्ट शो यू, द ओनली यूज ए मूविंग एवरेज हैज इज आल्सो टू स्पॉट ट्रेंड, ठीक है। अगर ये मूविंग एवरेज ऊपर जा रहा है मतलब हाँ मार्केट ट्रेंडिंग है, अगर मूविंग एवरेज नीचे नीचे आ रहा है तो हाँ मार्केट डाउन ट्रेंड में है, मूविंग एवरेज अगर फ्लैट है मतलब market is in a sideways. That is the Sir, only do use. moving average help in swing trading? No, it doesn't. सर ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वगैरह? Nothing. All are same. Exponential moving average क्या करता है? वो बस वेटेज देता है। अब देखो सिंपल मूविंग एवरेज क्या होता है, आज का प्राइस 10 है, कल का 20 है, परसों का 30 है, ठीक है। तो आज 40 अगर है तो सिंपल मूविंग एवरेज होगा 40 प्लस 30 प्लस 20 प्लस 10, तो 4 दिन का मूविंग एवरेज हो गया वो पिछले 4 दिन का, ठीक है। कैसे सर समझा? एक मिनट रुक जाओ, मैं इसको समझाता हूँ आपको। चलो एक एक्सरसाइज करते, कैलकुलेटर निकालो आप लोग। सर वीवैप का कैसा? छोड़ दो यार वीवैप, मैं बता रहा हूँ ना, इतने मैं पूरी क्लास का पर्पस ये है कि आप कम से कम इंडिकेटर्स पे ध्यान दो, ठीक है। चलो मूविंग एवरेज आपको, हाँ कैलकुलेटर निकालिए सर। हाँ चलो कुछ कुछ कैलकुलेटर निकालो, सब मैं कुछ आपको मूविंग एवरेज समझा देता हूँ एकदम इजीली क्या होता है। कुछ कुछ ऊपर से जा रहा है सर, थोड़ा डीप डाइव कर दो। एक मिनट रुको यार। हेलो, मैं कह रहा था कुछ एक मिनट हेलो, काश आप थोड़ी होमवर्क भी कर लीजिए। बोल रहा हूँ हाँ बोलो। सर, मैंने कल के कोर्स के लिए ना फीस पे किया था। अरे कल के कोर्स की कल बात करते हैं यार, अभी आज की क्लास चल रही, ठीक है, बाद में बात करते हैं, ओके बाय। हाँ अब देखो मूविंग एवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, तुम लोग आपको कैलकुलेट करके दिखा देते हैं। देखो जैसे फॉर एग्जांपल 5 डे ले लेते हैं जाके, ज़्यादा कैलकुलेशन ना करना पड़े, ठीक है। 5 डे मूविंग एवरेज आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कैलकुलेटर निकालो गाइस, निकाला आपने? यस। ठीक है, अब ये देखो ये 3 जून 105 पे मूविंग एवरेज की वैल्यू कितनी है? मूविंग एवरेज की वैल्यू यहाँ पे देखो कितनी है, कहाँ गया, ये देखो 3 जून 1 o'clock पे मूविंग एवरेज की वैल्यू है अराउंड 35514.9, मतलब 35515 है, राइट, लिख लो इसको, ठीक है। अब देखो अब ये कैलकुलेट कैसे होता है, इसका क्लोजिंग प्राइस क्या है इस कैंडल का, अब देखो ऐड करो, शुरू करो, 35519 35519.6, ठीक है, किया? यस। प्लस 35532.6 प्लस 35535.25, कितने हो गए? 3 हो गए ना, प्लस 35506.2, ठीक है। मैं ये देख रहा हूँ, देखो क्लोज प्राइस देख रहा हूँ सब में, ठीक है। तो 35506.2 और प्लस ये कर दो 35483.15 और इन सबको ऐड करके डिवाइड बाय 5 कर दो, देखो सेम वैल्यू ये आ जाएगी आपकी, आ रही है? यस सर, सर सर एक बार रिपीट करोगे? नहीं सर, आ गई ना। तो देखो मूविंग एवरेज क्या होता है, ये यहाँ पे हर कैंडल पे जो मूविंग एवरेज है वो क्या होता है, 5 डे मूविंग एवरेज मतलब पिछले 5 कैंडल का क्लोजिंग। अभी देखो यहाँ क्लोजिंग मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि क्लोजिंग बेसिस पे कर रहा है, अब ये तुम इस पे चेंज कर सकते हो, ठीक है। इंस्टेड ऑफ क्लोजिंग प्राइस, देखो यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस की जगह हाई ओपन लो अलग अलग चीजें यूज कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हमने क्लोजिंग प्राइस पे किया, नॉर्मली लोग वही यूज करते हैं। तो कहीं किसी भी पॉइंट पे अगर आपको मूविंग एवरेज चाहिए तो क्या है, पिछले 5 कैंडल का, उस कैंडल को मिला के पिछले 5 कैंडल का एवरेज जो क्लोजिंग प्राइस है वो मूविंग एवरेज हो गया यहाँ पे, ठीक है। सो दैट इज द ओनली थिंग। तो अब उससे क्या मिलता है, अब अगर मूविंग एवरेज बढ़ता जा रहा है मतलब यही है ना कि बाइंग हो रही है, ट्रेंड है, देखो क्योंकि ये मूविंग एवरेज बढ़ता जा रहा है, क्यों? क्योंकि क्लोजिंग प्राइस बढ़ता जा रहा है, राइट। सो ओनली यूज ऑफ ए मूविंग एवरेज इज टू स्पॉट ट्रेंड। अगर 50 डे मूविंग एवरेज है
तो पिछले 50 कैंडल्स का एवरेज है, और अगर 50 डे में प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, बिकॉज 50 डे से मार्केट इज इन अप ट्रेंड, राइट? 5 डे मूविंग है, 5 पीरियड मूविंग एवरेज मतलब पिछले 5 कैंडल से है, ठीक है, तो उसका सिग्निफिकेंस थोड़ा कम होगा। ओके, सो दैट्स हाउ यू डिसाइड। इंट्राडे में कितने दिन का मूविंग एवरेज? दिन नहीं, पीरियड बोलो, दिन नहीं, क्योंकि ये 5 कैंडल वो सारे 5 मिनट सेम दिन के ही हैं, राइट? तो पिछले 5 कैंडल 5 पीरियड, डेली चार्ट देखोगे तब वो दिन हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, ओके, अगर अब जब डेली चार्ट देख रहे हो तो हर दिन की क्लोजिंग देख रहा है, राइट? हर दिन, इस दिन की क्या क्लोज है, इस दिन की क्या क्लोज, तो इसमें 5 डे मूविंग एवरेज पिछले 5 दिन का, ठीक है? अगर आपने 5 मिनट कर दिया तो इसमें ये जो मूविंग एवरेज वो क्या है, पिछले 5 कैंडल्स का, ठीक है, मतलब पिछले 25 मिनट का। सर वो 52 वीक हाई ब्रेकआउट नहीं था, वो क्या होता है? नथिंग यार, वो बस वैसे ही वो एक इम्पोर्टेंट प्राइस पॉइंट है, उसके ऊपर भी प्राइस चला गया, बहुत दिनों से स्टॉक उसके नीचे था, आज उसके ऊपर चला गया, मतलब कि ऑब्वियसली पीपल आर नाउ सीइंग दैट द स्टॉक हैज वैल्यू मोर देन इट्स हाई, so it will go up, that's why it is important. So what is the application of the moving average? What is the application of the moving average once I told we you, have the received only the application is to spot trend. That is the only application a moving average has. Okay, if a 50 period moving average is trending and a 5 period moving average in uptrend, you give more importance to 50 period because it is seeing that in past 50 candles the trend is upward, while a 5 period moving average will just say okay, only in past 5 candle I have seen upward movement, but before that it might be sideways or down, so that is less important than a higher period moving average. That's the only message. तो वो मूविंग एवरेज तो ट्रेंड लाइन से भी तो पता चली जाएगी। हाँ, ट्रेंड लाइन से पता चल जाएगा, एग्जैक्ट। तो इसका कोई उतना यूज नहीं हो, जो लोग यूज करते हैं ना क्रॉस ओवर एंड ऑल, कि मूविंग एवरेज के ऊपर चला गया बाई कर लो, नीचे नहीं, चुतियापा है वो सब, ठीक है? सर हर टाइम फ्रेम का मूविंग सॉरी ट्रेंड अलग अलग होता है, तो कैसे सिलेक्ट करेंगे कौन सा टाइम फ्रेम? So it depends now on your trading. Okay, if you are trading intraday, so you will look at small time frame, क्योंकि आपको आज ही के दिन में बाई करना है और आज ही के दिन में सेल करना है. So you look at 5-minute chart, small moving averages, ठीक है? Because you are concerned about the short term trend. आपको एक छोटे से ट्रेंड में पैसा बनाना है, ठीक है? आप एक स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप आर्ली चार्ट देखोगे, डेली चार्ट देखोगे, क्योंकि आपको चाहिए कि हाँ, अब मान लो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड है, तो आप वो देख के तो डिसाइड कर नहीं सकते हो ना कि मुझे पूरे महीने के लिए ये से HDFC बैंक आज ऊपर गया, ट्रेंडिंग है। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहीं पे देखो बैंक निफ्टी दिख रहा है कि हाँ 5 मिनट चार्ट में यहाँ पे नीचे गया, तो डज इट मीन कि पूरे महीने नीचे जाएगा? नहीं, ये तो उस दिन का ट्रेंड था, उस दिन काम किया, बट सिर्फ उस दिन के मूवमेंट को देख के यू कैन नॉट टेक अ स्विंग ट्रेड, राइट? सो the timing that you are seeing, the time frame you are seeing, that will decide what type of trade you are doing. If you are doing an intraday trade, look at small time frames because you are concerned about that day's movement. But looking at this movement, you cannot say ki in a month what will happen. Okay, for a month you need to see at a higher time frame. So once you see it hourly, now you see if in hourly you are seeing that okay, bank nifty is in a range. What is the range? This is the top. Okay, this is the bottom, this is the top, this is the bottom. Okay, so this is the range bank nifty. So again it might follow something like that. Okay, so you will not take a swing trade of buying over here, selling over here, though intraday there was a selling, but you will not take, because in higher time frame or a swing trade you will see okay, it is near the bottom of this range, so you will look actually at buying. Okay, so that's how you have to look at these particular indicators and moving averages. And the stop loss would be previous low? Stop loss will be like this is a trend range bound market, so stop loss will be this, below, just below this. Okay, so okay, like guys. swing, like Once you said that do not enter when candle is going up, let's finish this candle, so how can you determine when to enter? So I mean, that's all I was talking about, sir, right now, right? Okay. You decide when to enter, when to exit based on the context. Okay, right, not on the candle only. Okay. Like here I was saying right now you see this is a range bound market. Okay, so in a range bound one, first of all what you will think, your thinking will be what, you would expect a reversal. Okay, you will expect it will come down from here, it will reverse. This is your thinking. Okay, now
once the price comes here, you see what is happening. If it is showing you a reversal or not, you will not just because the price has come, you will enter a reversal trade. Now here, two things can happen. Either it can go down or it will reverse. You are expecting a reversal, okay, because it is a range bound market. Now, if it reverses, shows a green candle bullish, okay, then you get the confirmation and you enter long. But if it breaks and closes below, then your theory, which was that it is a range bound market, that is failed. So in that case, you will take a short position. That's why I say always that you though have a trade plan, but you should always wait for the candle to close, because only once the candle will close, you will know what theory you are going to, what plan you are going to apply, right? Got it, guys? Yeah, right. Thanks. Chalo guys, let's move ahead. ठीक है. अब similarly you have indicators like RSI, okay, moving average हो ही गया, stochastic. अब देखो दो तरीके के इंडिकेटर होते हैं, लीडिंग और लैगिंग. ठीक है, लीडिंग और लैगिंग का मतलब क्या होता है? ठीक है, लेट्स सी दैट. ठीक है, अब देखो मूविंग एवरेज, लाइक आई सेड, मूविंग एवरेज अभी आपने कैलकुलेट किया, तो जब ये क्लोज प्राइस यहाँ पे बन गया, ठीक है, तब तो ये वैल्यू आई ना मूविंग एवरेज की, राइट? Getting my point, guys? Yes. 5-day moving average, you got the value once when this candle was closed. Okay. Yes. So it means what? Only after the candle is closed, this moving average has been formed. Okay. So any indication or any idea that it will give, that will be after the event has happened. Okay. So that's why this is a lagging indicator. Similarly, volume. You will get to know volume only after the candle is completed, right? जब candle complete हो गया, then only you will know the volume. So volume also is a lagging indicator, because जब तक candle complete नहीं होता, you don't know कि what will be the volume, whether will it be less or high, right? So that is also lagging indicator. What is a leading indicator? Leading indicator is something which gives you an indication before something has happened. For example, RSI. Why RSI is a leading indicator? Because RSI, minimum value can be 0, maximum value can be 100. So if RSI reaches, say, somewhere around 10, okay, max it can go to 0, not more than that. Okay. So mostly chances are it will go up. So it will go up, it means there will be a reversal in place. Okay. So that's why RSI, you can say it is a leading indicator. Or for example, stochastic, that's also is a leading indicator, because there is a range. They are always between a range. So range ke niche, so कि हाँ ठीक है, अब तो नीचे है, तो it will go up only. So that's why it is giving you an indication before the price has happened. So that becomes a leading indicator. Okay. That's about the indicator types, guys. Okay, let's not go so So much do in detail. volumes matter? Yeah, volume matters. By looking at the volume only, you know na, कि if a big investor is So, buying, but selling. sometimes the volume change. Yeah, so see, market is about probability. Okay. Probability कभी किसी चीज की 100% नहीं. See, all the things you are learning here, you will go and apply. It doesn't mean 100% of the time you will be right, and that's why you have to manage your trade risk. Okay, you have to keep a stop loss so that in case you are wrong, you do not lose much. Okay, so this is theory which you go and apply, but obviously that can be wrong at times. Okay, and for that there is a stop loss. Okay, so it's a probability game. It's just that you have to be. अब देखो, आप रोड क्रॉस करते हो, जैसे बताया, आप गाड़ी देखते हो, गाड़ी की स्पीड दिमाग में रखते हो, फिर सोचते हो हाँ आपको हिट नहीं करेगा, then you cross, but still people get hit, right? So it's a probability. Okay, if your calculation is right, the probability is right at that time, you make money, else you lose money, but most of the time you're right. हर दिन तो आप रोड पे नहीं लड़ते हो ना, you drive, you don't get hit every day, but someday obviously you will get hit, चाहे आप हर चीज सही रखो, right? So it's about probability. Just market is also just like that. You have to be safe from your side by managing risk, okay, by keeping your stop losses. Rest you have to analyze and take the trade. That's all you have to do. ठीक है guys, चलो next. Now अब आते हैं यार मेन जो काफी लोगों का है, फ्यूचर्स ऑप्शंस. ठीक है, ये लास्ट स्लाइड है. ओके, सो लाइक पहले हमने डिस्कस किया था, एक स्टॉक होता है, स्टॉक की कुछ प्राइस होती है, उसके बेसिस पे फ्यूचर्स होते हैं, कॉल ऑप्शन होता है, पुट ऑप्शन होता है. वो होता क्या है वो डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है,
तो और पहली एक और चीज और कि क्यों फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग होती है, अभी आप देखोगे ना, कभी भी अगर आप एफएनओ स्टॉक्स देखो, you should always trade in futures and options, not in cash market. Why? Because futures and option में क्या बस होता है, ठीक है लॉट फिर, साइज मैं होता ना है. आपको करूँ 15-20 मिनट में और फ्री होऊंगा मैं। हाँ जी। या सो अब देखो guys, क्या होता है कि फ्यूचर्स में एक लॉट साइज होता है. ओके, सो उसकी वजह से क्या होता है, अब स्टॉक को कोई एक भी खरीद सकता है, दो भी खरीद सकता है. मान लो से फॉर एग्जांपल आपने एचडीएफसी बैंक 500 खरीद लिया, ठीक है, से 1400 पे खरीद लिया, आपको 1412 पे आपको प्रॉफिट बुक करना है. आपने 1412 पे 500 बेचने को डाला, 500 if you bought at 1412 and you want to sell it at 1412 at 5 when HDFC stock reaches 1400 say 20, you bought at 1410 and you want to sell it at 1420. Now problem with cash market is when you sell 1420 पे when you put sell order, जब आप sell order डालते 1420 for 500, since in stocks people can buy 1 2 3 or 4, it might be possible that there is no buyer at 1420 for 500 quantity, so your trade will not get executed. Okay, it will get executed at an average price, and if you put a limit order, it might not even get executed. Only if you sell at market, then it might get executed at an average price. Okay, and that's the benefit of trading in futures and options, because there is a lot size limit. Everyone has to at least buy or sell one lot. That lot, if it is of 500 quantity, you will be able to sell it at whatever price. So that is the benefit. Second benefit is what? It's about risk and reward. When you buy a stock, you can hold it for whatever time you want, right? Until the company gets liquidated, you can hold it, right? So आप कोई स्टॉक खरीदते हो, हमेशा के लिए रख सकते हो, ठीक है. तो वहां पे आपका रिस्क, अब लोग क्यों फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड करें भाई, उसकी तो एक्सपायरी है, इट हैज एन एक्सपायरी, व्हाई शुड पीपल ट्रेड एंड टेक द रिस्क? सो देयर कम्स द लेवरेज. Okay, why you trade in futures and options? Because to buy 500 quantity of HDFC Bank, which is trading at 1500 around, you will need 7.5 lakh rupees to buy 500 quantity. While buying in futures, you'll get it only at 1.5 lakhs, 1.7 lakhs, 2 lakhs. Okay, now even after the increased margin. So what is the benefit that you are getting? The benefit that you are getting for taking the risk is that you can buy a higher quantity, okay, with a lower amount of money. So that's the benefit that FNO offers you. Okay, and that's why most people trade in futures and options. Okay, so that is the benefit of futures. Now what is call option, put option, futures? Let's talk about that. Okay, so call option क्या होता है? Ashutosh bro, I have one question. Yeah. So whenever we take leverage, so suppose we have loss, okay? Mhm. So what amount get reduced from our account for losses? Like if I am trading in leverage. I did not understand the question. Can you repeat again? So as you said, if you buy a lot side of 500 stock, 500 HDFC stocks, okay? So you need 4 to 5 lakhs, right? Or use the second option is to trade in future or option. So then you Give have me a to minute. pay. Just give me 1 minute. Hello. Hello. Shall I continue? Yeah, just ask me. Okay, I understood your question. You are saying that if I buy a stock of 5 lakh, then can I make a 5 lakh loss or not? Though I have paid only 2 lakh. That is your question in nutshell, right? Yes. So you will not, because the moment your loss is more than 2 lakh, your broker will start asking whether you add fund or I will liquidate. Okay, that's where you get the message na, that your margin utilization has reached more than 100%. Okay, because you use 2 lakh only to buy 5 lakh a quantity. By loss can be 5 lakh. Okay, so the moment your 2 lakh is loss is more than 2 lakh, broker will start asking whether you put money or I will book your loss. Okay. So So you cannot if I make more take than what you leverage, put. so automatically broker get going to like book the loss if I Yeah, take leverage. broker will book your loss. Okay. Okay. Yeah. ठीक है. तो अब देखो call One put question. Yeah. One question before you start. Difference between future and option. Yeah. So coming to that. Okay. So Ashutosh, let's first, guys, let me first one discuss, question. then we'll talk about questions. Okay. Only Let's. one question to No, this hold point. it. No, hold it. This is the last slide. After that, you ask me. Okay. Chalo. So let's discuss now what is an option.
ऑप्शन नाम से क्या समझ में आ रहा है? It is an option for you to do something or not to do something, right? Okay. So एक जीरोधा का वार्सिटी आपने किसने लोगों ने पढ़ा है? I asked everyone to read varsity. Any one of you who like have read this? Yes, I have read it. Yes, yes, Yeah, yes, yeah. yes. So they have explained it very beautifully in varsity. Very beautifully, they have explained what is an option. Okay, those who have read, they will understand where I'm picking example. Those who have not read, I'll give you the example. Say, for example, say there is the Akshay is there on the call. Okay, Akshay has a plot of land. Okay, which is right now say is of 10 lakh rupees. Okay, now what happens ki there's a rumor in the market that jahan pe Akshay ki land hai, where Akshay's land is there's a new highway coming. Okay, now with that rumor there will be a lot of people who will be interested in buying Akshay's land because they will be thinking once highway will come the cost will go up, right? Okay, so that might happen. So I am one of that person who is interested. Okay, now when I am going to buy Akshay's land, I have a risk. Okay, I am like, okay, if you buy it of 10 lakh, there can be two things. If the rumor is correct and actually highway comes, okay, then the price will go up, okay, and I will make money. Okay, but if rumor turns out to be false, okay, my whole 10 lakh will go. I'll be investing 10 lakh and it's just like cash, okay, like stock. I'll be holding that for forever, and the moment if it goes up in future, I'll be able to buy, or else I will not be able to. Okay, so how to minimize risk? So I go to Akshay and I say to Akshay, ki, yaar Akshay, why don't you sell me your land? Okay, and I don't have money right now. What I do, ki I'll pay you 1 lakh as a booking amount. Okay, which is now think of this 1 lakh as premium that you are paying. Okay, and I say I enter into a contract with Akshay, and I say, yaar Akshay, I'm paying you this 1 lakh right now. Okay, end of this month, or you can think of end of this month as a time when the news will be confirmed. Okay, so say महीने के end में announcement होने वाला है, so you're like कि चलो end of this month Akshay, this contract is valid until end of this month, and at end of this month I will have this option कि either I'll pay you 10 lakh and buy this land, okay, or I will not buy this land, okay, and I will not pay. So in that case, what happens ki end of this month pe, if the news comes true, okay, I pay Akshay again 10 lakh rupees, okay, and I buy the land. So if the land price say goes 15 lakh, okay, I make how much money? 1 lakh I paid premium, 10 lakh the cost of land, now the cost is 15, okay, I make 14 lakh profit, okay, 4 lakh profit. That's my profit that I am making. Now what other thing can happen? The other thing can happen is that the rumor is remains rumor, the news is wrong, कोई ऐसी announcement नहीं आती है. So in that case, what will happen? Two things can happen. Either Akshay's land cost remains 10 lakh, or it can go down. Okay, it can become 8 lakh. Okay, but in that case, how much I'm maximum losing? 1 lakh, because I will say Akshay, okay, I'm not interested in your land anymore. I don't want to buy. Okay, so I lose maximum 1 lakh. What is that 1 lakh? The premium. So in option, what you are losing maximum, the 1 lakh rupees, that is the premium. So whenever you buy an option, the maximum loss that you can have is the premium amount that you pay. Okay, that is what is the premium of an option. Now, if I would have bought that land from Akshay, okay, instead of paying 1 lakh, I would have paid him say 10 lakh and I would have bought this land. Okay, then that would have acted as a futures for me. Okay, at the end of, if I would have entered into a deal with Akshay saying, Akshay, you take 10 lakh rupees from me, okay, give it this land to me for 10 lakh rupees, and at the end of the when the news comes, at that time I say to Akshay, I'll decide whether I have to sell to someone or not. Something like that was a contract. Then in that case, that becomes a futures. Okay, the first thing what I did, I bought it for 1 lakh rupees. I just entered into a contract saying, no, I have the option whether to buy your land or not buy the land at the day of expiry, which is the day of announcement. That is option.
Okay, now other thing what can happen between me paying Akshay 1 lakh rupees and the announcement that आज मैंने अक्षय को 1 lakh rupees देके I made this contract. Now what happens 5 days later, say chief minister takes he comes to that particular land site, he visits that. So the now rumor is even more strong. Kare, chief minister has also come. Now the possibility is very high that the land will come. So now someone else say from the group, if I say Aarti is there in the group. Okay, now she comes to me, says, because she has also seen the news, she says okay, chief minister has come, so she is now like okay, now think she is also very sure that okay, and this news might become true. Okay, so she will now come to me and say okay, I heard that you are in a contract, Ashutosh, with Akshay. Okay, you paid 1 lakh and you have the contract that at the end of the expiry you will buy the land. Okay, why don't you enter into a contract with me and you pass me that contract? So what contract I had with Akshay, now Aarti is asking me, you give me that legally, you pass me that, right? Okay, so I say, Akshay, Aarti, how much will you pay? Aarti says okay, I'll pay you 3 lakhs. Okay, because Aarti believes now okay, even this 10 lakh becomes 15. Okay, and I pay 10 plus 3, 13, I'll still make 2 lakh profit. Okay, so Aarti pays me 3 lakhs. Okay, and now the contract is with Aarti. Okay, now if Aarti another finds another someone, so for me what happened? My premium was 1 lakh. I made 3 lakh in 5 days just because someone visited and the rumor became even more serious. Okay, so I made more money. So that's what futures and options is about. You got it, guys? Yes. इससे simple explanation मैंने आज तक कहीं नहीं देखा है. And Zerodha guys have done a fantastic job of explaining this. So basically एक तरीके से हमें फ्यूचर में लायबिलिटी है खरीदने का, पर ऑप्शन में हमारा चॉइस है कि हम मना कर दें, हमें नहीं चाहिए. हाँ, that's why it's called option, and that's why the maximum loss in option that I can have is one, the premium. Futures में क्या हो सकता है कि if I bought the land for 10 lakhs, okay, end of the expiry of the cost of the land is now, say rumor was wrong and goes 5 lakh, I book 5 lakh loss, right? So in short, we can say that in the future have more risk, more reward, and in the option we can say loss is limited and reward is high. Yeah, so not reward is high. I'll just say in option you have a limited loss. Okay. So I have in a question. option, your loss is limited to the amount of money that you have paid from. That's it. In future, your loss can be the total amount, okay, of that particular underlying. Now that underlying, if in this case it was land, if it is a stock and if the stock becomes zero, you make total loss. Okay. Okay, got it. Thank you. Sir, I have Can one I question. ask a question? Yeah, go ahead. Yeah, Santosh this side, I just want to ask, do we have any option to roll over for futures? Okay, so that's another question. It's not part of this thing, but I'll just tell you, no, it is not. In India, it is not possible. So in India, rollover just means you have to book loss in current month future, you have to buy next month. That is rollover in India. Okay, done. Thank you. Okay, so as you said, like in options we have limited loss, right? But whenever you stay, mostly you buy futures, like so. As you said, like trading is different, theory is different. Okay. That's why I told you, beginner intermediate is theory. How to use this theory in market, that is different. See, now you also have to understand one thing. Like I gave the example that Aarti came to me and said, okay, Ashutosh, you pay, I'll give you 3 lakh and you pass me this contract. When did it happen? When the CM came, right? Now, yes. CM came 5 days later. Now, if say CM would have come 1 day before, okay, just 1 day before. So, could Aarti would have come to me before that? No. Then my 1 lakh rupee that I have invested as premium, that would have been deteriorating. No one would have been interested. That is like last hour move in Bank Nifty. Okay, now 1 day before, if CM would have come, Aarti would have come to me and said, no, I'll give you 3 lakh. And no. And because now I'm sure 1 day before only has come. So I'll be no, not 3 lakh, I'll want 5 lakhs. Okay, so that's how option is about also timing. Okay, that's why you have theta value.
which is called theta, and those things we'll discuss in detail, okay, later on. सर फ्यूचर्स में लिक्विडिटी का इशू आता है क्या? नहीं यार, फ्यूचर्स में लिक्विडिटी का इशू नहीं आता है हमेशा। तो देखो ओपन इंटरेस्ट ऊपर चला जाता है, उसको ब्लॉक ट्रेड में डाल देते हैं एनएससी। So difference between call option and put option. So the same thing. See, call option was, I gave you an example of a call option. Okay, right? Where I am buying thinking price will go up. The other, vice versa would have been put option. Someone would have been betting instead. There would be someone else who would be saying ki nahi, this news would be fake, and they would already be getting into a contract saying ki okay, if it falls, I will buy at this price. So they would be benefiting from the fall. So it's just the opposite of what I gave the example. सर ऑप्शन सेलिंग में मार्जिन क्यों ज्यादा लगता है? What happened? ऑप्शन सेलिंग में मार्जिन क्यों ज्यादा लगता है? Okay. ऑप्शन सेलिंग में मार्जिन देखो क्यों ज्यादा लगता है। अब देखो जो मैंने एग्जांपल दिया उसे समझाता हूँ। अभी अगर मैंने शॉर्ट किया होता, फॉर एग्जांपल जैसे तुमने बैंक निफ्टी है, ठीक है, 32,000 पे चल रहा है फॉर एग्जांपल, ओके, रुक जाओ चार्ट पे देख के समझाते हैं, अच्छे समझ आएगा। ठीक है, अब देखो फॉर एग्जांपल बैंक निफ्टी 35,250 पे चल रही है, ठीक है। से तुमने यहाँ पे एक ऑप्शन खरीदा 35,200 का, ठीक है, तो से उसका प्राइस रहा होगा 100 रुपीज। अगर जब तुमने अगर खरीदा और से बैंक निफ्टी ऊपर नहीं जाती, कॉल ऑप्शन मान लो तुमने खरीदा, इफ यू बॉट कॉल ऑप्शन ऑफ 35,200 at 100 rupees here, say bank nifty doesn't go up, okay, you will lose how much? 100, okay, which you have already given to the broker, so broker doesn't have to worry about, okay. But if say you would have shorted 35,200 call option at 100 rupees here, and say bank nifty would have gone to say 37,000, okay, then you must be making how much loss? Around 100 will become how much? Around 2,700, 2,500, and you will be loss of 2,400 points, right? But your broker would not pay for your cost. That 2,400 loss you will only bear, na? Broker will not bear. So since in selling options your loss can be infinite, okay, bank nifty can go to any level upwards if you sell it, okay, and you can make infinite loss. So broker will charge higher margin for you from you to protect itself, okay, and the moment you start making that much loss, again just like futures, they will start asking you add money, add money, add money, okay. So that's why in selling options your margin is higher, because the broker doesn't want to take the risk, okay, while when you buy you already pay the premium, so it's okay, you don't need higher margin. What is the meaning of open interest? What is the meaning of open interest? That will cover in intermediate year, okay, volume So, open what intermediate. is ETF? So what is ETF and how it works? ETF is exchange traded fund, okay, those things you just Google it here, you don't need to just investing. Ashutosh, No during importance of live that in trade, trading. Yeah, man. Ashutosh, Sir, last during question. live trade, when Wait. you say that Yeah. you short Divis Lab, for example. So are you saying we have to short that Divis Lab for intraday or the futures of Divis Lab? When did I say that, ma'am? For example, just when you say that. Whenever I say short, I mean always futures. Futures, okay, not Yeah, the unless stock. I Because, specify the option, it always means future. okay, no, means why I'm asking is because if that particular You stock cannot is short a there. stock, ma'am. You cannot short a stock. You can never short a stock. Okay, that's not possible. not even MIS in the intraday. No, intraday you can do, because in intraday you can short, and at the end of the day you have to anyway buy. Okay, thank you. Okay. Hello, sir. Trading cycle. Hey, Ashutosh, just one small Guys, question. one by one. So one by why one. there can be a case where the future of the stock or the underlying and the actual price of the underlying are not same. Why is that? It should be the same Your theoretically, voice is isn't it? echoing here. I cannot hear you properly. Sir, trading psychology के बारे में थोड़ा सा बता दीजिएगा. Yeah, that's what we are discussing now when we're talking about price action, right? Where is support, resistance, how to read candles. That was trading psychology. Sir, Okay, you have to understand the psychology of the fellow traders. Where will they keep stops? Where will they try to book profit? That is trading. I'm more detail we'll talk in advanced. But sometimes during intraday trading, you short call options. So how did this work? Like I don't understand that. Like, Can you come again?
Yeah, sometimes use short call option, right? So during So we'll intraday. discuss this in intermediate and advanced here. Okay. Now I think basic questions are over. Like you guys are now asking other things. Hey, We'll just discuss. one last question. Last question here. So Last we only question. spoke about moving averages. What about other indicators? Don't need to learn all the indicators here. Not useful. Okay. And the Sir, application of few will be I'll be discussing in intermediate and advanced. All right. So we'll close it now. Any other questions Thank which you, are sir. left, ask in group. I'll reply to them. Okay. Thank you, sir, for all that. Thank you guys. Thank you, sir. Take care. Thank you. And, Thank you, sir. Thank you. Thanks, guys. Thank you, sir. I hope you guys learned something. Okay. Useful. Yes, sir. Yes, sir. Take care. Thank you Chalo for guys. being available. Thank you, sir. Thank you Thank you. everyone. Bye bye. Thanks.